जहां टेक्नोलॉजी की बात है और अडॉप्शन की बात है, किस तरीके का पेनिट्रेशन आप देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में टेक्नोलॉजी और अडॉप्शन का? देखिए, ये जो दशक है वो टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी जो अपनाएगा वो सरवाइव करके, अपनाया नहीं तो धीरे धीरे उनका अंत है, दिखता है, अभी क्लियर कट ये दिख रहा है। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो आज क्या है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री अगर सरवाइव कर रही है, वेफर थिन मार्जिन में जो काम करने वाली इंडस्ट्री है हमारी, सरवाइव कर रही है, वो टेक्नोलॉजी की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उसमें फ्यूल का कंजम्पशन और वेर एंड टेयर, बेटर टेक्नोलॉजी की व्हीकल, ये सब की वजह से हम लोग अभी सरवाइव कर रहे हैं। अदरवाइज जो पुराने जो टाइम थे, आज से 9 साल या 10 साल पुराना टाइम, वो हालत आज होती तो आज एक भी ट्रांसपोर्टर, एक भी हमारी कंपनी है ना सरवाइव करवा। और जहाँ तक अशोक भाई ने जो बताया, तो मैं ये बात से सहमत हूँ कि सेफ्टी फीचर्स हमने भी एडॉप्ट किए हैं, ताकि हमें तो भारत बेंज जैसी कंपनी से अवार्ड भी मिले हैं कि 3 लाख 5 लाख किलोमीटर चलने वाली गाड़ी एक्सीडेंट फ्री है। मतलब मेंटेनेंस उसका एएमसी लिया हुआ है, लेकिन उसके अलावा कहीं ब्रेकडाउन तक नहीं हुआ है। और सेफ्टी फैक्टर इन्होंने कहा बहुत ही उपयोगी है कि ड्राइवर के आगे पीछे अगर कैमरा लगा है, कहीं भी नजदीक डिजायर लेवल का जो डिस्टेंस है, वहाँ डिस्टेंस अगर नहीं वो मेंटेन करता तो भी उसको अलर्ट आ जाता है। तो एक्सीडेंट फ्री रखने के लिए ये टेक्नोलॉजी सेफ्टी एंगल से भी काफ़ी उपयोगी है। लेकिन आने वाले समय में हर एक को ये मन से या कंपलसरी अपना ही पड़ेगा। और जैसे इन्होंने कहा कंपलसरी करने की, तो मैं हाल ही में 3 दिन पहले केरला से आया। केरला में आगे जो आदमी बैठा है ड्राइवर के साथ, उसको सीट बेल्ट कंप्लीट कंपलसरी है। कंपलसरी अगर सीट बेल्ट नहीं है और 10-20 किलोमीटर वो गया और उसमें 3 कैमरा लगा तो 6,000 का दंड भुगतना पड़ता है। तो उतने कॉशन हो गए वो लोग कि पहले बाजू में बैठने वाले को बोले पहले सीट बेल्ट आप लगाइए, बाद में मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो ये देखिए, भय बिना प्रीत कहीं। तो ये कुछ चीजें मानव मतलब मैन पावर डेथ को बचाना होगा, तो ये अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। Okay, so किस तरह से करनी है वो सरकार अच्छी तरह जानती है। Okay. And since we have the positive of time, I would like to come back to you, Mr. Goel. I think when you talk about technology, one of the things you also talk about, not just the adoption on the tech side, but also the solutions made available to people. आपने कहा कि cost ज़्यादा नहीं है, आप you can rent it, you don't have to buy everything, you can start renting it. What message would you have for other transporters in this room listening to you right now who say we do not have, since sir talked about wafer thin margins, that is the reality of road transport sectors. Many operators that we have spoken to in Jaipur and Delhi said we have such fine wafer thin margins that we don't know whether we'll be able to sustain this business, and we don't know how to get out of this business as well. So to these people, how would you sell technology? देखिए मैम, सारे लीडर्स बैठे हैं यहाँ पर एंड छोटे मोटे नहीं है। पहली बात तो अगर मैं इन गैदरिंग की बात करूँ तो जो मैं सॉल्यूशंस को बता रहा हूँ, पहली बात तो जैसे मैंने बता दिया 600 to 800 रुपीज पर मंथ, मेरे ख्याल से किसी को भी ज्यादा नहीं लगे एक ट्रक के अगर वो कॉस्ट कर रहे हैं, विच कम्स टू नॉट इवन 50 रुपीज अ डे और समथिंग। तो बहुत ही रीजनेबल चीज है वो, तो उसमें करने में कोई हर्ज ही नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, आप इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखिए। आज वही ट्रकिंग इंडस्ट्री में मैं हूं, वही ट्रकिंग इंडस्ट्री में जो आप बोल रहे हो वेफर थिन मार्जिन वाले हैं, तो क्या कारण है कि यहाँ जो बैठे सारे सक्सेसफुल है, जो मतलब वी मे बी इन द टॉप 5 or 10 कंपनीज हु टेकन ड्राइवर्स ऑन पेरोल। ये बड़ी एक चीज है जो पेरोल पे नहीं लेते। उतना करने के बावजूद अगर आप सर्विस अच्छी दे रहे हो और वेफर थिन मार्जिन का, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप किस मार्जिन में काम करना चाह रहे हो। सो आई थिंक दे शुड अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट्स डेफिनेटली आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जो मैंने शायद ये टेक्नोलॉजी 5-6-7 साल पहले शुरू की होगी और मैं इसका असर देख ही रहा हूं कि वी आर ग्रोइंग, प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं,
कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड हैं, तो वी हैव बीन एबल टू रिटेन द कस्टमर्स फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो उसका मुझे तो काफी फायदा हुआ है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक्सीडेंट जो सबसे मेजर कारण है अपने ट्रेड का, अगर हम उसे रोक पाए, अगर हम किसी की जान बचा पा रहे हैं, तो इससे अच्छा कार्य और क्या हो सकता है। एंड इट इज व्हाट 500-700 रुपए महीना, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग वी कैन डू। All right. And before I wrap up, Mr. Shah, I think to sum it all up, sir, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, सरकार भी अपनी तरफ से टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए कई प्रयास कर रही है, भरसक प्रयास कर रही है। हमने कई सारे सिस्टम्स जो कि मोबाइल मैनुअल सिस्टम्स होते थे उनको मोबाइल कर दिया। कई सारे सिस्टम्स जैसे इनफैक्ट हमने पिछले 2 महीने में, मैंने बताया, हमने काफ़ी सारे रोड ट्रांसपोर्टर्स से बात की, तो उन्होंने कहा कई ईज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली हैं। कई जगह पे जहाँ हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता था, वो एक तरीके से क्यूज अब नहीं होते हैं, लेकिन एक अंडरलाइंग सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप क्या फ्यूचर एनविजन करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए आने वाले 10 सालों में, टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए क्या फ्यूचर आप एनविजन करते हैं इस सेक्टर के लिए? देखिए, जो आपने बताया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उन्होंने ONDC, मतलब क्या है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये स्टार्ट किया है। ये स्पेशली SME एंड MSME, उसका बेनिफिट उनको तो मिलेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट वालों को भी मिलेगा। प्राइसिंग बेनिफिट क्या है, कंपैरिजन सेक्टर, रूट सेक्टर, ये सब चीज़ें उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके अलावा देखने जाओ तो छोटे छोटे ऐप या ऐसे काफ़ी टूल जो काफ़ी हद तक सस्ते हैं, कोई इतनी कॉस्ट नहीं है, लेकिन वो क्या है कि मैन पावर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। आने वाले जो 10 साल है, मेरे हिसाब से तो गोल्डन पीरियड है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। गोल्डन पीरियड इसलिए मैं कहूंगा कि आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, एक जमाना था कि हम लोग चीजें इंपोर्ट करते थे। 21 के अगस्त महीने में पहले गवर्नमेंट ने 192, उसके बाद में 300 और टोटल मिला के 1150 आइटम ऐसी बैन कर दी जो इंपोर्ट नहीं कर सकते। और मेक इन इंडिया की तहत वो इंडिया में प्रोडक्शन होने लगा है। मेक इन इंडिया का जो नारा चला था 2014-15 से, लेकिन उसका आउटकम अभी दिखने लगा है। और वॉल्यूम ग्रोथ जो आया है उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट, मतलब हमारा जो सेक्टर है, उसकी ग्रोथ मैं समझ रहा हूं कि आने वाले 5 साल में CAGR 20% से अगर कम रहेंगी तो मुझे हैरानी होगी। तो गोल्डन पीरियड आ रहा है और एक ही है, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। क्या है कि सेल्स वाले आते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस छोड़ के आते हैं कई मर्तबा, तो खुद इनिशिएट लेना पड़ेगा थोड़ा, और कुछ फर्म रहना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट के लिए है, और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करेगा वो सर्वाइव करेगा, बाकी का मैं कुछ कह नहीं सकता। ऑल राइट, जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा वो Yes. सरवाइव करेगा, बाकियों का नहीं पता। टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली पूरे बिजनेस, 90% ऑफ इंडियन बिजनेस है ना, 80-90% वो टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उपयोग लेंगे, वही सर्वाइव कर सकेंगे। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना Yes. बहुत जरूरी है। जो नहीं करेंगे शायद वो पेरिश करें, जो करेंगे शायद वो प्रिवेल करे रहें। विद दैट आई थिंक विल क्लोज दिस सेशन। जेंटलमैन, Mr. Shah, Mr. Goel, thank you very much, both of you, for joining in. Thank you. Our chief guest is still with us. If anybody has any transporter has any question, I think our chief guest would be very happy to answer. ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अभी भी हमारे साथ हैं, अगर कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज पूछ लीजिए। I think I'll ask a question, sir. Since I'm the journalist in the room, I'll ask a question. Sir, can we get a mic? Sir, the mic, please. Yes, sir, please, sir.
Sir, in the past couple of months, as I mentioned, काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर्स से बात की. मुंबई में आज हैं, इससे पहले पूरी देश में घूम कर आए, बॉम्बे गए, दिल्ली गए, जयपुर गए, आज यहाँ पर हैं. एक कॉमन कंसर्न है सारे ट्रांसपोर्टर्स का, और क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं सेक्टर को, एक पैन इंडिया आपसे जानना चाहूँगी. सवाल ये है कि भले ही हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस करने की बात करते हैं और काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आज भी 9% है. सरकार चाहती है कि इट शुड कम डाउन अंडर 8%. अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस द बर्डन on transporters? Because right now a lot of transporters feel, at least if not in Mumbai, because everybody here is very prosperous in Mumbai, in other parts of the country they feel they're burdened a lot. देखिए, जब हम लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से पैरामीटर है उसको हमको देखना पड़ेगा. पहले तो होता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए. जो हाईवेज है वो 6 लेन हाईवे होने चाहिए. मुझे कहते हैं वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ पर एज अ गवर्नमेंट आप देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा बन रहा है. दूसरी चीज़ आती है, जैसे अभी शाह साहब ने बताया कि हम टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल करते हैं कोई भी सेक्टर में. टेक्नोलॉजी जो है वो कॉस्ट भी कम करती है और इफ़िशियंसी भी कम करती है, इफ़िशियंसी भी बढ़ाती है. तो जैसे जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो हर स्टेज पे होती है. वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी होती है, वो ट्रांसपोर्टर के अपने डे टू डे अफेयर्स में होती है, वो गवर्नमेंट के सिस्टम में भी होती है. तो जितना ये पूरे इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा उतनी हमारी इफिशियंसी भी बढ़ेगी और कॉस्ट भी कम हो जाएगी. तीसरी चीज़ होती है, कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स होते हैं. पॉलिसी इनिशिएटिव्स में जो अलग अलग राज्यों की अपने अलग अलग पॉलिसीज़ है उसमें कहीं तो भी एक सिवियरिटी होनी चाहिए. हमारे यहाँ पे फ्री मूवमेंट ऑफ व्हीकल भी नहीं है. कई राज्यों में, महाराष्ट्र में भी है, बॉर्डर चेक पोस्ट है, उसको भी वो भी एक उसमें थोड़ा सा हिंड्रेंस होता है जब हम स्पीड की बात करते हैं. तीसरी चीज़ है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है अमंग द बिजनेस, वो भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि यहाँ पे कॉस्ट और एफिशिएंसी में कमी आती है. मेरे ख्याल से अगर हम सब चीज़ें करेंगे तो ये जरूर हो जाएगा और हर चीज़ पे सरकार काम कर रही है. थैंक यू. Okay, I have one more. Oh, I see a hand raised. Yes. My name is Virendra, sir. I don't know how much it will be relevant to you now, but just I thought of asking a question. Like we are into free towing companies from last around 8.5 years. Okay, sir. So what, as per we do a lot of calculation, we have a lot of technology also. One of the cost parameters, like मेरे पास सब burden feel कर रहे हैं. तो बर्डन फील करना मोस्टली हमें 3-4 मेजर कॉस्ट होते हैं ट्रांसपोर्ट में. एक तो व्हीकल परचेसिंग कॉस्ट, देन डीजल, टायर एंड टोल. बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट होते हैं सर, जिसमें हम लोग काफ़ी पॉलिसी के अंदर आता है. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है सर, हमने समृद्धि महामार्ग खुला अपना, काफ़ी ट्रांसपोर्ट लोग उसको नहीं जाना चाहते. रीज़न इज टोल टू मच हाई सर. मीन्स जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2015 में हमारा सेल्स कॉस्ट का टोल वो 3.7%, आज वो टोल 8.5% 9% पे आ चुका है. सो बेसिकली द रेट्स आर नॉट गोइंग अप एज कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट. जो बेनिफिट मिलना चाहिए फ्री टोनर को ट्रांसपोर्ट को, जो रोड बढ़े, हम स्पीड बढ़ रही है, ट्रांसिट टाइम कम हो रहा है हमारा, एवरेज रनिंग किलोमीटर 200 मीन्स 600-700 किलोमीटर आराम से चला लेते हैं सिंगल पायलट अच्छे रोड पे जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं. तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कहीं भी सब्सिडीज लानी चाहिए. मीन सब्सिडीज आती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसा MTNL खुला है, दे शुड बी सरप्राइज फॉर ट्रांसपोर्ट. हाँ, ट्रक लेके जाओ आपको डिस्काउंट मिलेगा. सब्सिडीज होनी चाहिए, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस, स्टेट बिजनेस है. तो you should encourage more transporters to use new facilities. So end of the day, the fixed cost is going to remain the same. ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ. ने दिया है और किसको और कोई फॉरेन एजेंसी ने दिया है, तो ये सब फैक्टर उसमें लिए हैं. देखिए, जब आप
जैसे मैंने बताया कि आप एक फैक्टर लेके लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात नहीं कर सकते हैं। जब आपको टोल लग रहा है उसी समय आपका फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो रहा है, आपका एवरेज जो रनिंग पर डे वो भी बढ़ रहा है। तो यह सब चीजें हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटी आती है। इसलिए थोड़ी अब जैसे हर साल इंडिया में करीबन 2.5-3 करोड़ व्हीकल रजिस्टर हो रही है। ये व्हीकल रजिस्टर क्यों हो रही है? क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये इकोसिस्टम बनी है। तो अगर ये चीज फायदेमंद नहीं है तो इसको कोई एजेंसियां फंड नहीं करती। तो मैं मानता हूं कि आपको थोड़ा सा टोल लग रहा है, बट उसके आपके फायदे भी शायद आप उसको आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो कॉस्ट कंसिडर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वैसी नहीं है। इट्स अ विन विन सिचुएशन सबके लिए। All right, thank you, sir. Sir, before I let you, I don't know if there is any other question. Okay, can we please pass on a mic there? I think I will give my mic. Sorry, I'll first. Yeah, good evening all. Just sir, I want to tell you that I want to recollect you that there was a decision of a Supreme Court for not plying vehicles more than 8 years in Mumbai and metropolitan cities. This decision was taken long back in 2001 when BS1 standard was not imposed. Now we are in the stage of BS6. Why government can't revoke this decision when we are having better vehicles with good fuel emissions? No, right now in the city of Mumbai, Yeah. the diesel vehicles beyond 8 years, transport vehicles are not permitted. Other vehicles beyond 8 years, as per the Government of India guidelines, has to go a fitness as per the periodicity. And the private, that is non-transport vehicle, they are allowed. No issue in that. But the Supreme Court judgment is for the diesel vehicle. So I understood that it is for a diesel vehicle, but the decision which was taken that time, BS1 was also not in our transport industry. Now we are in BS6 vehicles. I appreciate your point. Yeah. But this we have to see the total composition of vehicle as on date. The vehicles which are plying on the road, how much they are the BS6. Only the new vehicles. I think BS6 vehicle has to reach a stage of 8 years, to my mind. Correct. So as on when we keep on analyzing the impact of the decision, and we'll take the appropriate decision at the appropriate time. So, but the transporters who are working in a Mumbai metropolitan region, MMRDA regions, they are working on a local basis only. So when I started my business something 35 years back, my vehicle used to get free in 3.5 years. Now after 7 years also we can't make it. So after what will happen, my second generation or third generation will not like to come in the transport industry, because every 7 years, 8 years we have to again take the working capital finance, or we have to again take the vehicle loans. Now we are with a better industry. No, we are in a BS6 stage. Your point. Somebody from means, yeah. Yes. Yes, your point is well taken. If the vehicle, when that will reach to be at 8 years time, we will study and we will analyze the decision. All right, sir. Yes. Thank you. Mr. Yes, sir. Yes, sir. Coming to you, sir. Coming to you. So I have one question. Right now everyone is also talking about the sustainability everywhere. So wanted to understand what is like the government has set as a target or something to replace or introduce more EV vehicles for the transporters. And also the problem for this EV vehicles is that, you know, they are not able to find a lot of charging stations as well. So, and we are also trying to reduce the carbon emission footprint everywhere. And today's date, customers looking for a lot of sustainability options. So I see a lot of transporters are also struggling somewhat. Yes, you know. Just to add to that, sir, from what we've been covering in the media, government has a target of 30% EVs of the total fleet operating in the country by 2030. Do you think that target is achievable? I will tell you, as far as Maharashtra, we have the EV policy.
And by 2025, our aim is to have 10% of the newly registered vehicle as a EV vehicle. And I will tell you the today position by December 2022, 8% of our newly registered vehicles in Maharashtra are the EV vehicle. So we will be achieving our target much earlier, at least few months earlier than the projected target. As far as the fleet you are talking about, the public transport, most of the public transport, Maharashtra is a state which has the highest number of public transport vehicles as an EV vehicle. And we will be achieving that target of 2030 by 2026 or by 2027. Number one. You are talking about the green fleet. Yes, we have the Government of India has the scrapping policy. As you know, we have announced the scrapping policy. Now, all the non-transport vehicles beyond the 15 years have to be scrapped. Otherwise, they will have to undergo a mandatory fitness test on the automatic testing station and the automatic fitness center. We have started this process. We have given LOI to 10 scrapping stations, out of which 2 are operational. Okay, and rest of the scrapping facilities will be operational in next 3 to 4 months. We also have the incentive policy for that. If you are scrapping the vehicle and buying a new vehicle, you will get a 10% rebate on the tax, motor vehicle tax of the new vehicle. Some state has offered more than 10% also. As of now, till 2025, there is no tax on the EV vehicle. Okay, so I think these are the incentives, and I told you earlier. Today also 8% of the EV vehicle of the new vehicles are the EV vehicle. For the charging station also, yes, we have the plans for setting up the charging station. Of course, it is done by the MACDCL, not by my department, but the charging station will soon come. But more importantly, even the battery life has improved much. If you see the vehicles, they are not finding much because this the battery on the new vehicles, they are almost running, I think, 600, 700 kilometers. So the city goers, office goers, they are buying the car because they have the charging facility at home. But no doubt the public infrastructure, public charging infrastructure will also come in a very big way in the coming months. Yes, thank you. Sir, with due permission from you, जो मेरे भाई ने पूछा था कि 8 बरस की गाड़ी अभी टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो उनको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये मुद्दा हमने सरकार के पास लिया था और ये हाई कोर्ट का निर्णय है जो कि मुंबई सिटी के लिए एप्लीकेबल है। और जब आपसे मुलाकात हुई, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शंभूराज देसाई से भी मुलाकात हुई, तो तभी सरकार ने स्पष्ट किया था कि हाई कोर्ट का निर्णय है, आप इसको चैलेंज करिए हाई कोर्ट में और सरकार आपका पूरा समर्थन करेगी। दिस क्लैरिफिकेशन आई वांट टू गिव, थैंक यू। और हम उसके प्रोसेस में हैं, हमने एडवोकेट भी किए हुए हैं, कुछ स्टडीज रिपोर्ट चल रही हैं, वो जब भी तैयार होगी वी विल मूव विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। थैंक यू। यस, Thank you, sir. Do we have time for one more question? We don't, unfortunately. My apologies. Thank you very much, sir. Thank you. All right. I think with that, we'll kickstart our next panel discussion, which is on logistics to laggards. Logistics laggards to leaders, I beg your pardon. We are hoping to be leaders through this conclave. And remember, India also has a very prominent aim of a $5 trillion economy by 2030. In fact, India is on course to reach that $5 billion economy by 2027. $5 trillion economy, I beg your pardon. For this, connectivity and robust infrastructure will become crucial points, and the National Logistics Policy, which was rolled out in September of 2022, provides a required framework for boosting the road transport sector. As logistics develop, manufacturing, production, automobile and other industries like warehousing and infrastructure development will also develop.
This will in fact spur the growth in commercial real estate and industrial parks, which in turn will help India's logistics and transport sector. Let's talk about how to become leaders, and since we've been doing so for a while, let me call upon Chirag Kataria, who is the director of Shri Nasik Goods Transport. Let me also call Bal Malkit Singh, who is the owner of Bal Roadways and chairman, core committee and former president of All India Motors Transport. And finally, let me call upon Mahinder Arya, who is the owner of SSRL. All right, I think since we are talking about future, Chirag, you look like you're the youngest here. So let me start with you. As far as becoming a logistics leader in this country is concerned, हमने पिछले 1 घंटे में काफी बातचीत की, काफी bottlenecks और challenges की बात की. आपको क्या लगता है prominent bottlenecks क्या हैं जो अगले 10 साल में हमको challenge करने होंगे to become a leader in road transport? So hi, I'm Chirag, and as we already spoke about AI and technology, so I think जैसे अशोक शाह जी ने, अशोक गोयल जी ने कहा कि technology is very, very important right now, and 80% business will be completely ruled and run by the technology. So first thing, what industry needs to adapt is कि कहीं ना कहीं हमारा जो industry अभी भी काफी unorganized है. So the people who really want to do well, or to right now I would say not do well, but just to survive also, they need to adapt softwares, then they need to have GPS devices in the trucks, and जो भी ये technology में आ रहा है हमारे पास, because very few players, I would say 10 to 15% players, they have ERP softwares with them. But right now technology is very easily available, very cheaply available. So somewhere ये technology में जैसे हमारे players आएंगे, तो कहीं ना कहीं they'll come close to the they'll have a smooth path towards the growth of the business. उसके बाद second चीज आती है regarding safety. So safety is again very important, because as we see कि driver का बेटा driver नहीं बन रहा है, and for every 1000 truck we hardly have I would say 700 truck drivers. तो वो जो 30% का जो gap है, it's because यहाँ पे हमारी industry में recognition नहीं है safety को लेके, people are not working towards safety. So when you care for the people, when you show love to them, you show respect to the people, definitely people will love to be part of your business or be part of your team. So somewhere अगर जो आपको truck drivers के बारे में भी सोचना पड़ेगा, it's not only about your technology, but again, because the drivers are the most important part of the business, they are the actual heroes, they are the one who's running the show. So आपको उनका भी उसी तरीके से ख्याल रखना होगा, एंड कहीं ना कहीं आपको उस तरीके से ख्याल रखोगे रोड सेफ्टी के बारे में आप जब काम करोगे, एंड आपको जब ऑफिस के अंदर व्हेन ड्राइवर इज बीन ट्रीटेड एज ए मैनेजर, तो ही आपके पास ड्राइवर सर्वाइव करेंगे. एंड दिस इज द सेकंड थिंग. एंड थर्ड थिंग आई वुड से अगेन इट कम्स टू द कि हर एक चीज़ के लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर वर्च्यू और डिसिप्लिन. आई वुड से डिसिप्लिन एक होना ज़रूरी है हमारे इंडस्ट्री में. एज आई टोल्ड यू कि इट्स अ वेरी अनऑर्गेनाइज, बट a good discipline is needed, जहाँ पे punctuality हो गया, business को लेकर discipline हो गया, so. All right, absolutely. I think that sets the stage. Mr. Singh, coming to you, sir, and taking away from one of the questions that you answered from one of the co-attendees was with respect to the challenges that road transporters face when it comes to life of the vehicles. Now that was just one part of the challenge. There are several other challenges, but before we come to challenges, we understand that National Logistics Policy was finally put in place in September of 2022. Since then till now, almost a year and a half later, what sort of changes have we seen on the ground? First of all, thank you Continental TV9 for inviting me for this session. And as you stated that September 17 was the date when Prime Minister Narendra Modi ji announced the National Logistic Policy at Vigyan Bhavan. And during his 90-minute address, in 87th minute he emphasized that the logistic cost should be reduced from 14% to single digit.
And as you clearly stated, that it is almost 8 to 9% at present. So things are changing, but it will be too early to gauge what changes it will be made. We have the good infrastructure, and we are going for the seamless movements. We have technology adaptation, faceless, but still, as Transport Commissioner Vivek Bibnevar during his welcome address or keynote address, you can say, had rightly stated, there are the challenges. Okay. And one challenge he empathized was the bottlenecks. Bottlenecks in way of the state checkpost. The political will is required for the abolition of the checkpost. He mentioned in his address that still we are moving toward a developed nation. And we have the entire infrastructure. We have the good roads. We have the high-tech driven technology vehicles, which is highly costly. But still, in spite of all that, and one of my brothers stated that our toll tax has gone from 3.5% to 9 to 10%. So we are paying for that also. We are paying for the good roads. We are paying for the good vehicles. But still, are we optimum usage of that vehicle has been done, which is not there. We are comparing with the developed countries. And in today's condition also, average vehicle plies around 280 to 300 kilometers per day. Where in the developed nation, it is 800 to 900 kilometers per day. So conducive atmosphere all across the national highway, state highway. There should be a proper truck terminals, parking bays, rest area. So political, and you will be surprised that already there is the guidelines from the Government of India, MORTH. Not a single advice, there are five advisories are given to the state government to abolish the state checkpost. महाराष्ट्र में चेकपोस्ट है, गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है, यूपी इतना बड़ा स्टेट है नहीं है, बिहार में नहीं है, तो स्टेट चेकपोस्ट की जरूरत क्या है? मैं ओपनली कहूंगा कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, खुलेआम हमसे लूट हो रही है. और टोल, वी आर रेडी टू पे द टोल, वी आर नॉट अगेंस्ट द टोल, बट द सिस्टम इन विच वे द टोल इज बीन कलेक्टेड. फास्टैग होने के बावजूद भी हम सब रोड से ट्रैवल करते हैं, कितना समय लगता है. एक स्टडी रिपोर्ट है, उसको कोट करना चाहूँगा कि जो समय की बर्बादी हाईवेज के ऊपर हमारी गाड़ियों की समय और ईंधन की जो बर्बादी होती है, उसके कारण 1,47,000 करोड़ इज द एनुअल वेस्टेज. ये पैसा हमारी इंडस्ट्री का है, जनता का है, और हम टोल कितना इकट्ठा कर रहे हैं. अब जाके कुछ 45-47,000 करोड़ हुआ है. तो इसमें कोई नहीं, टेक्नोलॉजी है क्या, पॉलिटिकल विल है हमारे पास इस सिस्टम को बदलने के लिए? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब भी गए हैं, उनसे हमने कई बार ये आग्रह किया है कि आपकी डबल इंजन की सरकार है. तो लोग हमसे पूछते हैं क्या दाल काली है, क्या दाल में कुछ काला है, क्या पूरी दाल काली है? तो लेकिन हमारी और आप जवाब क्या देते हैं? सुनिए, मैंने वी आर वेरी पॉजिटिव. ओके. सी ऑलवेज वी बिलीव इन ए कंस्ट्रक्टिव डायलॉग. हमारी मीटिंग भी कई हो चुकी है. लास्ट मीटिंग इस हमने रिपोर्ट कमेटी भी बनवा ली, कमेटी से रिपोर्ट भी बनवा ली. रिपोर्ट हमने ये भी इस कमेटी ने सजेस्ट कर दिया कि चेकपोस्ट एबॉलिश होने चाहिए. सिमिलरली हमने मध्य प्रदेश में भी करवा लिया है. अभी मैं बोला ना पॉलिटिकल डिसीजन, अभी लास्ट हमारी अंतिम मीटिंग है चीफ मिनिस्टर साहब से, उसमें हमें उम्मीद है कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे. ये सब चीज़ें अगर करना है, देश को बढ़ना है, और जो सपना प्रधानमंत्री देख रहे हैं, तो ये सपने उन्होंने देखे हैं, ये जमीनी स्तर पर साकार होने चाहिए, उनकी राज्य सरकारों ने करना चाहिए.
But we are very positive and we have done lot of exercise in last 2 years. Okay. We compelled the government to form the committee. Committee submitted its report. However, the reports were delayed. We have the case file in the some court. उसने भी दिया है कि इसको आप लागू करिए. तो hopefully we are always positive, constructive, and we will the constructive dialogue. So ये सब चीजें लाने के लिए अगर प्रगति करनी है, जो सपना और पूरा करना है, तो ये जो bottlenecks है, पार्किंग नहीं है हमारे पास. ड्राइवर को कोई सुविधा नहीं है, उसको कोई इज्जत से बोलता नहीं है. अभी उस इतनी बड़ी ताकत है कि अगर चक्का नहीं चलेगा तो पूरा देश थम जाएगा. ड्राइवर नहीं, चालक नहीं हो. हाँ, तो वो ताकत आपने देखी थी 1 जनवरी को, 2 जनवरी सबने देखी थी. सबने देखी थी किस तरह सरकार हिली थी. तो ये जो उद्योग है, इसको आप ड्यू इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा. आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. आप इसको ये नहीं कर सकते कि आप पॉलिसीज लेके आइए, जो प्रैक्टिकल पॉलिसीज लेके आइए. यू कम विद द पॉलिसीज विद ड्यू कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स. एक कानून लेके आए, कोई स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन नहीं हुई, then the government has to admit that they have to backtrack. It was in hurry. Openly they admitted. But the thing is that we are always positive. और ये सब चीजें जब तक दूर नहीं होगी, तब तक जो हमारे सपने हैं, कहीं ना कहीं साकार नहीं होंगे. Okay, very good point, sir. Is it a lack of political will or is it lack of implementation? I mean, there seems to be a lot of political will, but there seem to be very little by the way of implementation of some of these policies. Mr. Singh, thank you very much. Very crucial points made. Mr. Arya, you know, since we are on the bottlenecks and we've now extensively talked about some of the challenges, every time we go to every city, we try and draw up a list. Sabse zyada problematic when it comes to keeping, you know, enough margins for transporters, सबसे बड़ा dent क्या होता है? Is it the dent of check post and the money that you have to pay at the check posts? Is it the dent of toll? Is it the dent of maintaining the fleet? According to you, what are your biggest cost disadvantages, not just yours but that of the industry? Yeah. See, first of all, we have to identify the nature of our industry. So we are not a large players industry. This consists of smaller players. Maximum movement is taken care by the small transport companies. If we compare with the developed nations like America, Europe, etc., there they have the large companies, companies owning 20,000, 30,000 fleet. Here, a single truck owner is also a transporter. So that is the scene all across the country. He has very limited area to play with. He has to survive. For him, the survival is his target. He is not concerned with any 5 trillion economy or whatever, because he's owning a truck and he wants to make his livelihood out of that. And either he himself is a driver or he has appointed a driver. So that is the central point of the whole issue. Had it been an industry of the large companies, it was very easy what Ashok Bhai said, both the Ashoks, the technology should be adopted. Now what will that single truck owner do? Will he buy a camera? Will he buy a GPS, or should he go for anything else? And where 80% of such trucks prevail, the population of such trucks is 80%. So it's a big question for the government also, whether they should think just for the progress, technology, advancement, or they should have a social concern also. So they are caught in between the two, the government. Same at the ground level. Now, there's no need to be pessimistic. Things have to change, and things will change. You're asking about what should happen in the next 10 years. So, in my opinion, things will have to reorganize. It's not that the people should be wiped out. People can reorganize. For example, consolidation. Now, everyone cannot do everything. I can do something, Chirag can do something, Malkiji can do something. If we come together, then we can do a lot of things. We can be like a large company. So this kind of approach is required, the consolidation among the smaller players. That will make them, existable. They will be existing always, and they will be able to deliver also. They will be able to adopt the technology. They will be able to do the sustainability part. That will come out of that. That's one. And the second point which you mentioned, or Malkit also mentioned,
nobody wants to talk about, dirty words. And the corruption is dirty word. Everybody is a victim of corruption in this country, at all levels. A transporter is more, because on the highway it goes unchecked. Everybody who has little bit of power demands bribe for no reason or rhymes. You cannot fight, because a poor driver is alone on the highway. He has no guts to fight that person. He will prefer to pay some money and get out of the situation. The transport companies also accept that as an expense. रास्ते का खर्चा है, देना पड़ेगा, दे दिया. तो ये प्रैक्टिस जब चलती है, तो वो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स की बात कहाँ से हम कर सकते हैं? और कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इटसेल्फ, कितने सालों से हमको पढ़ाया गया था कि 13% वी आर द हाईएस्ट इन द लॉजिस्टिक कॉस्ट. Suddenly, how did it come down to 8-9%? This has come down within the last 6 months. You're saying it hasn't, sir? It has. It has. But it was there. We were following a wrong line. We always argued at all platforms that these figures are not correct. It cannot be 13% in our country, where everything is so competitive. We are working at the smallest possible cost, whether it's a driver's cost or the maintenance cost or whatever. How can we be the costliest? We always challenge that. But the effect of what you asked, the Prime Minister's policy, the effect of the Prime Minister's two policies has come not much in the transporters, it has come into the government system. They have started taking things seriously. They are working on all smaller aspects. The first time somebody sat on working out this logistic cost, there was a committee, large committee from different sectors. My colleague Pradeep Singhal was a member of that. And that committee came out with this figure that the cost is between 8.9 to 9%, something like that. So it is a revelation of a truth which was there. We were following a wrong tagline, defeating ourselves. Now we can tell the world, you are wrong. Our cost is competitive. So the mindset needed to be changed, and that has changed because of PAPM's policies. All right, there's been a change in mindset. Yes, I would like to yes, Mr. add Singh. further. We have to protect the interest of the 85% small road transport operator. They are owner cum driver, so they are the self-entrepreneur. सरकार का एक नियम है, मतलब सेक्शन 67(1)(1) of Motor Vehicle Act 1988, इकोनॉमिकली वायबल फ्रेट रेट्स. लेकिन फिर उसी में जो आपने कहा था कि पॉलिटिकल विल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, ये नियम कहीं ना कहीं लागू करना पड़ेगा. हम इसकी भी जो सरकारें हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फेडरल सिस्टम है, समय लगता है. और कुछ सुझाव है, अगर इनको प्रोटेक्ट करना है, डीजल को जीएसटी में लाना, रैशनलाइजेशन ऑफ द टैक्सेशन, वन नेशन वन टैक्स, जो कार्टलाइजेशन अभी क्वेश्चन में भी था, क्या मेजर कॉस्ट है, इंश्योरेंस की है, टायर की है, चेसी की है, जो कीमतें बढ़ रही हैं उनको कहीं ना कहीं नियंत्रण लाना. और जो इम्प्लीमेंटेशन है, सेंट्रलिफाइड नोटिफाइड जो रूल होते हैं, वन टाइम इम्प्लीमेंट होने चाहिए. और जैसे कि महेंद्र आर्य जी ने कहा कि ब्राइब्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है. जब सारा कुछ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी हम तो अडॉप्ट कर ही रहे हैं जितनी हम कर सकते हैं. क्या सरकारी मशीनरी कर रही है? जब हैंडल डिवाइस के ऊपर मेरी गाड़ी का नंबर डाल के मेरे डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं, तो मेरी गाड़ी को क्यों रोकना चाहिए? कोई ट्रैफिक वाला रोक देता है, कोई आरटीओ वाला रोक देता है, कोई पुलिस वाला रोक देता है. वाहन है, सारथी है, यहाँ पर बैठ के मैं गाड़ी का नंबर देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं. जो माल जा रहा है वो ई वे बिल है, ई वे बिल में सब कुछ डिफाइन है. हाँ, रीजन टू बिलीव है तो आप चेक करिए. हर एक गाड़ी को रोकना, उसके कागज फिजिकली चेक करने, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने, वो आप ही अभी समझ सकते हैं क्या क्यों होता है. थैंक यू. Fair enough. Chirag, are you a first generation transporter? No, I'm the second generation. You're the second generation. All right. With a show of hands, how many of you would want your children to enter this field? आप में से कितने लोग चाहेंगे आपके बच्चे, आपके आने वाला परिवार भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आए? Okay. And how about the rest? I see maybe half the hands raised. How about the rest? Okay. The reason I asked Chirag is because in Jaipur, a certain transporter was with me in the panel. He said,
I would never want my kids to enter this field. The challenges are so humongous, and because we are so small, you know, taking away from what Mr. Arya and Mr. Singh said, that 85% of the players are very small. Right? They are literally entrepreneurs. They started the business and it's become very difficult for them to now wriggle out of it because of the challenges. Now, my question to you is, what according to you, and to sum it up, are the major existing challenges that you think transporters are struggling with at the moment? That is number one. And what sort of a vision do you have for the sector in the next 5 to 10 years? Challenge number one, I would start with my journey. So when I joined the business, so even I never wanted to be a part of a transport company, my company itself. So because of some, we had some issues in the company during 2010, and I would say I was forced to be a part of a company. And when I joined the company, I was like, kahan fas gaya? The first thing was, kahan fas gaya? Kya chal raha hai? Because I would see my father dealing with truck drivers and abusive language हमारे में काफी use होता है. Then I would see drivers, like, you know, they're not obeying to the orders, matlab, you know, and वो ज़माना था, like, you know, कि जहाँ पे, as I told you, कि now systems have changed completely, but that time it was completely unorganized, and me going to the godown, so manager would be, like, you know, in the banyan, shirtless, so I would see कि क्या चल रहा है, matlab, you know, what industry I'm into, matlab, जहाँ पे I have a friends who have like industries, जहाँ पे इसका industry है, company है, they have, like, you know, what type of business I've got into. But I think with time, and that time technology was not so adapted by the transporters, or I would say very, very few players. Like I would say, Ashok bhai, V-Trans mein hoga, Ashok Gol ji ke paas hoga, Mahindra ji ke paas hoga, very, very, very few players who were, like, you know, that they had that passion, or I would say they had that wisdom towards technology. Baki, I would say that time 90% players didn't have that much access to the technologies also. So when I joined business, तो हमारे office में सिर्फ एक ही computer हुआ करता था. We had 35 branches, but only one computer. And so then I decided कि ऐसा तो काम नहीं चलेगा. Somewhere, either I have to change the, like, you know, या तो मैं खुद बदल जाऊँ और कोई business में चले जाऊँ और start something of my own. Or I have to take a call कि यहाँ पे कुछ बदलाव लेके आना पड़ेगा. And as my company name is SNGT, so I also transferred my company from Sri Goods to SNGT. So I'll come back to this thing again. So then what I decided was that I need to train and change all my staff, like, you know. So obviously, purane jo staff hai, you can't just, like, you know, ask them to. So then we decided to train, we adapted technology, we had a training sessions, jahan pe we took almost 2 years just to train people. And slowly then culture was, like, you know, formed in the company. We started building a culture, and dhire after the training, and obviously we started having AGM, annual general meetings. So AGM we used to train them, teach them, and give them the goals. And uske baad individually, me myself used to visit every region. And to, like, you know, to be, for example, if I'm going to Gujarat, I'll be in Gujarat for at least 2 months, and wahan pe I'll be visiting every branch. I'll be staying in the branch for 3-4 days. वैसे ही करके slowly transformation started. So again, to the next generation, they are quite, I would say, the coming generation is going to be super lucky because we have technology, we have system process. And when I joined the business, that time a transporter was looked as a black sheep, या, like, you know, क्या खटा रहा है. So I was having a word with Ashok ji also. So अगर मैं किसी को बोलूँ कि I'm from a transport company, तो like अच्छा okay. So for when you hear transport, I'm talking about like 15 years ago. तो transport company का नाम सुन के ऐसा लगता था कि कोई no like बंदा होगा जो गुंडा मवाली होगा या very rough and tough type image था. But now you see that things have changed completely. A lot of educated players are there, and if you see right now also, जो startup का भी जो है, so you would say majority startups are coming into the logistics industry. So things have changed completely. पहले जो था और अभी जो था, बहुत बड़ा transformation आ गया. And right now, technology is leading the show. हमारे यहाँ पे industry में, if you see, technology is playing the main role, and I can see a lot of players have already adopted. People are, like, you know, changed completely. So अभी का जो generation है उसके लिए the things are very smooth, and with time definitely things are going to be superb. Okay. And are the drivers receptive to that change? Yeah, very much, very much. So right now every driver has a smartphone. They have GPS, they have smartphone. In fact, you won't believe. So we have a parcel delivery system. We have like door-to-door deliveries. So when we came up with a delivery app, jahan pe we also used to click picture of parcels. So when we came up with the delivery app, so obviously, like, you know, I'm not in that much day-to-day touch with the truck drivers. So then I just spoke to my team कि हम लोग plan करें. So we have 256 trucks. तो मैंने कहा कि इतने सारे truck drivers हैं.
तो अगर जो मोबाइल सबको लेके तो व्हाट विल द कॉस्ट, लाइक यू नो इट विल बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस बिकॉज एक बड़ा कॉस्टिंग आ जाएगा, फिर उनका इंटरनेट पैकेज हो जाएगा. एंड गेस व्हाट, सो मैंने टीम को पूछा था कि हमारे सभी ड्राइवर्स के पास है, एंड 92% पीपल हैव स्मार्टफोन. 92% ऑफ द ट्रक ड्राइवर्स, सॉरी, दे आर स्मार्टफोन. जो ऑलमोस्ट 200 के आसपास, 220 के आसपास लोगों के पास स्मार्टफोन है. So definitely drivers have adopted. They also, like, you know, I would say the current drivers are quite smart. See, the challenge is that driver का बेटा driver नहीं बनना चाह रहा है. Existing है जो with proper recognition, proper management, and if you have that humility and humble and love towards them, then definitely these people are gonna be the part of the industry. Okay. So change of mindset is needed, and for the youth, it's a very, very good industry right now, and green signal to all the youth who was not willing to be a part of it, but they should be part of it because we are the one who is running the economy. We are the backbone of the economy. अगर जो big transport के, nothing would work. Absolutely, 5% to the total economy. That's a substantial number. Mr. Singh, you know, one of the challenges that the entire economy faced was in the way of the coronavirus pandemic. A lot of transporters have not been able to recover some of the losses that they made during coronavirus pandemic, and the existing lockdown that time is still impacting them. Not just the fleet size has been impacted, but their drivers' lives, the life and health of their workers was also impacted. Do you think since pandemic till date, we are now, you know, entering 2024, we've entered 2024, are things back on track as they were prior to pandemic? See, our industry and drivers are the front line warrior. कोरोना के समय में जब व्यक्ति व्यक्ति से डरता था, हम घरों से बाहर नहीं निकलते थे. ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और हमारा चालक था जिन्हें अनुसूचित किया कि 140 करोड़ भारतीय भूखा न सोए. जान हथेली पर रखकर उसने विपरीत परिस्थितियों में माल को पहुंचाया. At that time, there was the challenges. Various initiative was given by the government in way of the moratorium, taxes में छूट state government ने दी. लेकिन coming to your question that are we back, मैं जो पर्सनल मेरा ओपिनियन है, कोविड का समय बीत चुका है, इंडस्ट्री पूरे ट्रैक पर है. आपने आंकड़े भी देखे हैं किस तरह गाड़ियां बनती जा रही हैं, कमिश्नर साहब ने बताया कि किस तरह बनती जा रही है. सो वी आर प्रोग्रेसिंग इन ए राइट वे एंड वी आर डेवलपिंग, बट स्टिल जो चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ पॉलिटिकल विल और इम्प्लीमेंटेशन से सरकार ने करने चाहिए. और ये व्यवसाय वैसे है कि इसमें कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट मेरे को नहीं दिखता. एक सोच है अपनी, किस तरह आप सोचते हो. वी एजुकेट कॉस्ट बेस्ड फ्रेट स्ट्रक्चर, लागत पे भाड़ा लीजिए तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा. कई हमारे मेंबर हैं, कोई विदाउट एनी कॉस्ट एनालिसिस काम करते हैं तो नुकसान ही होना है उसका. तो ब्राइट फ्यूचर आप है फॉर दिस इंडस्ट्री. आई एम द सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन मेरी पूरा काम देखती है एंड दे आर हैप्पी. सो कोई रिग्रेट्स नहीं है एंड वी आर ग्रोइंग ऑल्सो. ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज इज द सिस्टम. जो चेंज करेगा वही आपने कहा है कि प्रिवेल करेगा, जो चेंज नहीं करेगा वो पेरिश करेगा. Yes, Chirag. So I would like to add to this. जैसे कि आपने कहा कि current industry, हमारी industry is booming right now. I'll tell you why. Because जब से Make in India has been promoted, and as today only we heard that 1100 products are being banned from China. So definitely that has worldwide. Wow. So worldwide 1100 products have been banned. So उन सब की मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में हो रही है. So somewhere वो सारा बिजनेस हमारी कंट्री में आ गया. एंड वो आ रहा है तो डेफिनेटली हमारा कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी है, हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है. रॉ मटेरियल आ रहा है, ट्रांसपोर्ट उसको बिजनेस बन रहा है. वो रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, ट्रांसपोर्ट को बिजनेस बन रहा है. वहाँ से होलसेलर को जा रहा है, ट्रांसपोर्ट को बिजनेस मिल रहा है. अगेन गोइंग टू द रिटेल इज गेटिंग अ बिजनेस. और सिंगल प्रोडक्ट को एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू गुजरना पड़ता है. सो आवर इंडस्ट्री इज डूइंग वेरी वेल एंड वी रियली अप्रिशिएट द मेड इन इंडिया का जो हमारा गवर्नमेंट का जो मोटिव है. And the way people have accepted it, people are like, you know, accepting the Indian products. In fact, I'll tell you about this Diwali. So, हर साल दिवाली मेरे घर पे भी चाइना लाइट्स आती थी. So this time, not only my house, I would say my friends, my relatives, and everyone's house,
I saw that मिट्टी का दिया. So कहीं ना कहीं लाखों घरों में मिट्टी के दिए use हो रहे हैं. So Made in India has brought a tremendous change, and definitely the economy is one of the major reasons why the economy is doing so well, and everyone is so happy in the industry is because of Make in India. Thank you. All right. Mr. Arya, to sum it up, what we've heard so far, we've heard about the opportunities like the Make in India opportunity. We heard about the challenges like the freight cost, and despite building networks of highways, apparently interstate movement is still a major hurdle for all the transporters. If those hurdles were to be taken away, sir, let's say in the next year or so, and the government promises smoother transport between one state to another and facilitates a movement which is seamless, in your understanding, what sort of growth are you expecting in road transport sector? See, the growth is going to be anyways. The hurdles are only slowing it down. Because the movement, as Chirag said, the opportunities are coming up and the huge growth in terms of industrial growth is there. So that has to be completed with a complementary service like a transport. So transportation is going to be there. Only the government has to realize little more than that why these small hiccups on the road. Nobody is benefited with such things. And specifically, I would like to focus my talk to conclude on the drivers. Because the driver is the most neglected part of the whole logistical system. You see, we have attended a lot of conferences on the logistics, and driver never comes as a subject in any of those conferences. Rest everything is there, the roads, the quality of fuel, the quality of vehicle, and the government policies, everything is reflecting there, not the driver. Without the driver, everything is zero. Absolutely. And I must bring it up, sir. At TV9, we have talked about the drivers and the condition of drivers throughout this conclave. The whole economy includes what? The manufacturing, the mining, the agriculture, the import, the export. You deduct the driver from all these things and there is no movement. No movement, zero economy. When this is such a vital point, why the government does not focus on this? Why should he suffer? He is suffering. And we as an association, all our association, we are working for the welfare of that poor person. Because unless we make him comfortable, he should feel respected for his services. Like, the soldier is respected because he is fighting for the country at the border of the country. Similarly, he is an inside soldier. Within the country, he is fighting for every day, for all of us. So he deserves proper treatment, proper remuneration, his securities, everything is required, and the government needs to work on that. I think that's the message we should take out from this conclusion. So that's what I feel. Thank you. Thank you very much, Chirag Katera, Mr. Bal Malkit Singh, and Mr. Mahinder Arya. Thank you, gentlemen, for joining us on this very important subject. Thank you. May I now once again call back Rajneesh Kochkave, Head of India Markets and Direct Sales, Continental Tires. He will be speaking about some of the wide-ranging solutions Continental is presenting to its customers. Thank you. Thank you, Shweta, and thank you to all the panelists. For me, it was pretty exciting, and it made for a very good conversation also. क्योंकि ये वो बातें हैं जो कहीं न कहीं जिनसे हम काफी बड़े तौर पे इत्तेफाक रखते हैं. Technology, innovation, bringing new products into the market. See, before I get into this presentation, very small thing I would like to highlight. आप ज़्यादातर companies, बड़ी companies के भी जो life cycle देखेंगे ना, it's not more than 40, 50, 60, 70 years. Big names, Kodak, Eastman, lot of big names. I don't want to take the names of everybody. There are a lot of big names which could not survive even 100 years. We are 160 years old organization, and yet in automotive, आप कोई भी पैमाना उठा लें, we are in top 3.
चाहे वो टायर्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, you take on anything, we are in top 3. So not only surviving 150 years, but also staying relevant. And not relevant key also RAN types. Relevant wherein we are constantly featuring in top 3, either it is OEM supply, either it is after sales market supplies. So that is the company that I am here to represent. That is the confidence that I want you guys to have in the product that we offer. हम बहुत पैशनेट है प्रोडक्ट को लेके, हमारा बहुत बड़ा खर्चा जाता है R&D में, और कई बार हम इतने ज़्यादा पैशनेट हैं कि वी एज ए सेल्स गाय हम कई बार इरिटेट हो जाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट ठीक तो है, आप दे दो मार्केट में, नहीं देंगे. और ये मतलब आई हैव बीन हियरिंग दिस फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वी विल नॉट लॉन्च और इनिशिएट और गिव आउट एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट, चाहे वो पैसेंजर कार हो, चाहे वो ट्रक एंड बस रेडियल हो, if it is not top of the line and if it is not giving value to the customer. हमारे यहाँ cost effectiveness से ज़्यादा value selling पे बात की जाती है, and value selling is something when you look at a 360-degree picture. I was talking to one of our colleagues here कि it's not about pricing, initial pricing पे हम बात नहीं करते, हम value selling की बात करते हैं. So I will try and take you through couple of important things that I want to talk about. पहला तो किस तरीके से रिट्रेडेबिलिटी पे हम जा रहे हैं, क्यों हम रिट्रेडेबिलिटी करा पाते हैं, और जो टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं 360 डिग्री जो यहाँ पे कनेक्ट सोल्यूशन का हमने यहाँ पे एक डेमो भी करा हुआ है, वो क्या चीज़ है, हाउ इज इट इफेक्टिव. बट वी बिफोर वी गेट इनटू दैट, देयर आर लॉट ऑफ फर्स्ट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन. कैन वी प्ले द वीडियो? So this was in I would say not exactly everything that we wanted to put into a small video, but हाँ जितने भी major highlights हैं, and you could have, I mean you would have seen there are a lot of firsts to our organization, majorly being the patented tire, जो pattern होता है passenger vehicle में जो pattern होता है, and because of that we take care of traction, braking, cornering, maneuverability. ये सारी चीजें आपके पैटर्न से आती हैं. अगर मैं पैटर्न हटा दूं तो it becomes a very flat tire और उस पे grip और control will become extremely difficult. So we were the first ones in 1904 to actually give a pattern. उसके पहले पैटर्न नहीं होते थे. और अभी भी if you would see, I think in Formula 1 जो टायर्स चलते हैं
They are very fluid, and if anyone has seen that tire, उसमें pattern नहीं होते हैं. They are very soft, almost like you can push the tire inside. The rubber is so soft. So another one topic that I think it is coming up a lot of time, and it will keep on coming up, sustainability. Sustainability आज थोड़ा, I would say, has become more relevant because of जो आप अपने आसपास चीजें होते हुए देख रहे हैं in terms of climate change, temperature change. जहाँ पे गर्मी होनी चाहिए वहाँ पे बर्फ पड़ रही है, जहाँ पे सूखा होना चाहिए वहाँ पे बाढ़ आ रही है. I mean, if you look at US, look at Dubai, look at even in India, you can very well see the impact of climate change is pretty visible. But if you had noticed, I think long back we started to think about sustainability. We were very clear about that, this is something that needs to be taken care of. And one compound that we said, taraxegum, which is basically plant-based होता है, और उसका जो cycle tire, I mean, we are very famous also in cycle tires. हमारा जो Tour de France होता है, उसमें we are the major providers of tires, and also we are the major sponsors. बहुत सालों से कर रहे हैं. तो cycle के टायरों में this is something that has now gone into serial production. मतलब lot of companies also demonstrate technology, demonstrate products to also talk about their technology and technological prowess. But बहुत सारी चीज़ों को serial production आने में बहुत time लगता है, because sustainability is one thing, but offering a product which is sustainable also has to be feasible. मैं आपको 50,000 के बजाय लाख रुपए जोड़ी का टायर बताऊं और कहूं कि भाई उतना ही चलेगा, but ये पूरा sustainable है. I don't think there would be many takers for that. So sustainability also has to be something which is feasible. तो वो जो journey होती है कि हमने एक चीज develop तो कर ली, but to make it business, like to make it sustainable, that has its own journey. तो यहाँ पे हम वही बताना चाह रहे हैं in terms of how have we spoken about sustainability. If you'd see, we talk about dandelion plant, again the same taraxegum that we are looking at. And we have also tried something with PET bottles, uske plastic se bhi, but we are still in the process. It's not come under serial production. Where we are, how big are we as an organization? So we are practically in every country. 58, 59 countries may we are present. Sorry, 58 locations we have. And 58 countries, 550 locations. And this is expanding. I mean, we also would want to see कि जहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं, what is the kind of return on investment that we are looking at. Because जहाँ भी हम जाएंगे, either it is automotive or it is tires, which is very capital intensive. Again, when we provide a solution, we try to ensure कि ये solution किसी एक हिस्से को ना हो, कि हम सिर्फ ऑन रोड टायर बना रहे हैं, या सिर्फ हम पैसेंजर कार टायर बना रहे हैं, या हम सिर्फ ऑफ रोड बना रहे हैं, या OHT बना रहे हैं. तो यहाँ पे हमने ये भी कोशिश करा है, and we are pretty successful in all aspects, कि हमारे जो टायर्स है वो ऑफ रोड पे भी चल रहे हैं, ऑन रोड पे भी चल रहे हैं, रीजनल एप्लीकेशन पे भी हैं, हाईवे एप्लीकेशन पे भी हैं, and they're all, in fact, I would say in all aspects, और हर तरह की conditions पे, our tires have been giving one of the best results. तो मैं इसकी शुरू में भी मैंने कहा था कि I will touch upon something जो retreadability की हम बात करते हैं या molding की हम बात करते हैं, remolding. खास करके जब हम TBR की बात करते हैं, तो वहाँ पे one of the major, I would say, play also is about how many times can we retread the tire to get the complete value. So when we say value selling, it's not about कि मैंने कितने रुपए का टायर खरीदा और वो मुझे initial mileage कितना दे रहा है. I also need to understand कि अगर मैंने 100 टायर खरीदे हैं और मेरे को लग रहा है that the mileage of the tire is let's say 1 लाख किलोमीटर, मेरे 100 टायरों में कितने ऐसे टायर हैं 60%, 70%, 80%, 90% जो एंड ऑफ लाइफ तक पहुंच रहे हैं. तो माइलेज अपनी जगह सही है, कॉस्ट अपनी जगह सही है, बट व्हाट इज द number or percentage of the total tires that I am using which actually goes to the end of the life. Secondly,
एंड ऑफ द लाइफ अगर जा रहा है तो क्या वो सेकेंड रीट्रेड के लिए जा सकता है, फर्स्ट रीट्रेड जा सकता है? आई कैन से कि मुझे रीट्रेड नहीं कराना है, एब्सोल्युटली फाइन. व्हाट इज द वैल्यू द केसिंग इज फेचिंग मी? तो ये सारे कुछ सवाल होते हैं जो वी ऑलवेज वांट टू ask, we want to understand before we make a sales pitch to any fleet for that matter. So when we come to the retradability or when we come to the casing value, we believe we have the best casing in the industry. And why we believe this? Because whenever we have gone out and met most of the retraders, चाहे वो Max हो, TVS हो, Indag हो, they've always given us this feedback that boss, your tires have the best casing. It's just that हमको casing बहुत मिलते नहीं हैं. Now why that has happened? I just wanted to highlight. इसको हमने कहा है supreme technology. So that is what we have developed in the bead, जिसकी वजह से दो चीजें होती है. एक तो जो आपकी माउंटिंग डीमाउंटिंग जो एक आई वुड से जो प्रोसेस होता है वो कई बार काफी जगह कई बार टाइट हो जाता है, मतलब आप ठीक से डिमाउंट नहीं कर पा रहे, माउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी कई बार बीड डैमेज करता है. एंड सेकेंडली व्हाट इज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द बीड. सो विद दिस टेक्नोलॉजी वी हैव बीन एबल टू 4 times increase the durability of the bead and made it much more easier to demount and mount the tires. To make a better understanding, I think it will be good if we can see a small video on the same. Can we have that video? Tires undergo a great deal of wear and tear every day. This results in high heat generation at their contact point with vehicle rims, leading to tire degradation. Mounting, demounting, and retreading of the tires not only strains the bead areas, but also makes them brittle and susceptible to breakage. And all of this results in a loss of casing value and tire life for you. This is why Continental has specifically developed the Conti Suprim technology for our tires. Our new rim strip compound with superior anti-aging properties enhances tire bead flexibility, strength, and tear resistance. This results in robust and durable tire beads that improve tire retreadability. Additionally, a tire with Conti Suprim technology is 4 times easier to mount as compared to a tire with a conventional compound. Enhanced bead flexibility from the technology subsequently minimizes damage caused by mounting and dismounting. Conti Suprim technology ensures that our tires withstand heat degradation and are perfect for retreading throughout their lifetime. We are happy to announce that Conti Suprim technology has now been incorporated into all radial tires manufactured at our plant in India. This brings me to the second part, which is the 360-degree solution that we're talking about. देखिए मैंने शुरू में भी बोला था we have lot of technology in terms of vehicle management. गाड़ियों के लिए हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे टेलीमैटिक्स है. आजकल जो BS6 और नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें ऑलरेडी ये इनबिल्ट होता है. आपको उसमें सब दिख जाता है, गाड़ी कितनी देर खड़ी हो रही है, कितने स्पीड पे चल रही है, कैसी ब्रेकिंग लग रही है, कहाँ कितनी देर गाड़ी खड़ी रही है. सो यू गेट ऑल द डेटा which the telematics is able to give you, and there are a lot of options as well. So if you're driving a vehicle or if you have a vehicle which is like not have come fitted, factory fitted with these telematics, you can also buy it from the market. There are a lot of companies which offer a very competitive price. You don't need to buy it. You can also become a service provider. But when it comes to tires, and as somebody said, and not somebody, we also believe that as drivers are like key to the entire transport business, your vehicle is as good or as bad as the tires that you drive on. So from a tires perspective also, I don't see we have a very reliable data in terms of tire management and tire maintenance, if I can say that. अभी जो ये टेक्नोलॉजी है, this is only I would say
applicable for tubeless tire, तो वो थोड़ा सा limitation है, because हिंदुस्तान में आज भी if I look at the data, we are not more than 8 to 9%, 10% of the total potential of TBR as the tubeless potential. Slowly and slowly, I mean, we are moving towards the tubeless part as far as the TBR is concerned. We would, so that becomes more relevant. But फिर भी जहाँ पे भी हम tubeless use कर रहे हैं, this can be an extremely good tool to use. इसके दो फॉर्मेट्स हैं. एक, अगर आपकी गाड़ी 24 घंटे 48 घंटे में वापस आ रही है आपके यार्ड पे, तो there is something called yard reader, you can take help of that. But if the vehicle is, let's say, on move for 7 days, 10 days, then you can always look at something we called CCU, which gives you a real-time data. To explain it more, I think it's better if you play the video. The wheel, always a driver of change and a driver of business. But now we've reinvented it. Welcome to the second age of the wheel, an age of data in which managing your fleet becomes easier than ever. Because with Continental Digital Solutions, you are now directly connected to your tires. The data we collect and analyze for you constantly inform you about your tire's pressure, warn about potential damages even before they occur, and let you know when it's time for a change and which tire to choose. This way, you can not only reliably plan maintenance, you can also lower your fuel consumption and carbon emissions, whilst keeping your drivers safely on the road. But most of all, you get more uptime for your fleet, while your mind has a bit less to worry about. So this is the 360 that we are talking about. इसमें तीन तरीके की सर्विसेज हैं. जो थर्ड वाली सर्विसेज है उसकी मैं बात कर रहा था, which is basically meant for the tubeless segment. First two segment, the core services and the advanced services, they can be used even for the tube type tires. And when we say core services and the advanced services, these are services that I would not say that they are something which people have not heard of, or these are something, ये services ऐसी हैं जो बहुत ही कुछ अनूठा हम कुछ करना चाहते हैं. It's just that we would deliver what we commit to or what we are promising. Core services, very simple, all of us know. It's not clear, no? What it is written is not visible. It's something to do with Zoom. कोई नहीं, what I'll try and explain. So the core services में हम बात कर रहे हैं स्क्रैप टायर एनालिसिस. मेरे हिसाब से किसी भी फ्लीट में अगर आपको स्टडी करना है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू अ स्क्रैप एनालिसिस, बिकॉज दैट टेल्स यू how your tire maintenance is, that tells you how your vehicle maintenance is. They will tell you the reasons of premature failures. As owners also, I think I would encourage that, as and when, try and have a look at your scrap analysis in terms of to understand how the failures are happening and why the failures are happening. Because as a team, when we move into any fleet, the first thing that we do is do a scrap analysis to understand the pain points of the fleet. कि भाई आपकी दिक्कतें कहाँ आ रही हैं और किस तरीके से हम आपको क्या एडवाइस दे सकते हैं. So that is a core service that we do. Trainings, and again, as I was discussing, many a times when owners keep on saying कि आपको PSI इतना रखना चाहिए या ये ऐसे करनी चाहिए, drivers सुनते हैं, कभी नहीं भी सुनते हैं, but when it comes from
when we do it professionally, or let's say when it comes from some trainers, I think it creates an impact. They also understand कि भाई अगर हमारे यहाँ पे लोग बोल रहे हैं तो it is not कि कुछ ऐसी मजाक चल रहा है. These things have a certain relevance. तो चाहे वो ड्राइवर ट्रेनिंग हो, फिटर ट्रेनिंग हो, these are the core services that we see. The moment we go into the advanced services, that is where for us we have something called FCT, जो हम fleet check tool बोलते हैं. It's an electronic device. We have an electronic device which is called probe. I think everything is on display here, which does not require any manual data entry into the system. So they would basically do the entire management. They will check into the tires, do a physical inspection of the tire, and again a report gets generated in terms of what is the condition of the vehicles, what needs to improve, how are the tires being maintained, what is the pressure that we're looking at, and based on the lot of times fleet also gives us the data that ये टायर लगे कब थे, और अभी जो RTD होता है उसके basis पे we also give you a projected mileage, which also helps for a reality check, क्योंकि जब भी टायर बेचा जाता है तो आपको एक projected mileage बताई जाती है. तो based on the RTD, when you look at the projected mileage, आपको भी ये समझ में आता है कि भाई इस टायर की क्या माइलेज हमको एक्सपेक्टेड थी और क्या माइलेज हम देख सकते हैं. सो दीज आर द टू बेसिक सर्विसेज दैट वी डू. और जब हम ट्यूब टाइप बेचते हैं या ट्यूब टाइप टायर की फिटमेंट होती है, तो दीज आर द टू थिंग दैट वी कीप ऑन डूइंग maybe every couple of months, so that you also get a report in terms of how your vehicle is getting maintained and what is your projected mileage, how is it changing. और ये ओनर से ज्यादा ड्राइवर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज द मोमेंट वी टेल देम सी योर 140 अगर आप रख रहे हो, तो हाउ योर प्रोजेक्टेड माइलेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, तो फिर उनको भी समझाना आसान होता है. सिर्फ बोलते रहने से कि ऐसा रखना चाहिए ऐसा रखना चाहिए, जब आप उसको हर 2 महीने में डेमोन्स्ट्रेट कर देते हो ना कि दिस इज हाउ सी इट इज हैपनिंग, तो उनका भी बाइन बढ़ने लगता है. दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ठीक है, दीज आर द थिंग्स नॉट फॉर सेइंग सेक, but they actually make an impact. And the last is digital solution. I think we have another video on that. That will explain in a more detailed fashion what we do in the digital solution. Can we play that video? Managing a commercial fleet can be challenging. As a fleet manager, you always want to ensure that your tires are properly inflated, fuel and mileage costs are controlled, and that your trucks are on the road without any issues. Continental's internal studies have found that a fleet of 10 vehicles can save up to 35,000 ringgit annually just by inflating the tires correctly and by making full use of the tires without scrapping them early. We realize the multiple issues that you face as a customer. And that's why we would like to introduce you to Conti 360's comprehensive range of services and solutions to help you ensure your tires are taken care of the Continental way. As part of our core services, our team conducts scrap tire analysis to give you a detailed review of your tire's performance and highlights areas where you can focus on improving tire usage. Moreover, we offer training to your fleet maintenance team and drivers on efficient handling of tire usage and maintenance, effects of driving behavior on fuel and tire costs, and fleet audit reports for your scrap tires. Our advanced services include the Conti Fleet Check service, where our qualified technical customer service team visits your fleet to perform tire inspections on a periodic basis. This includes monitoring your tire characteristics such as pressure, tread depth, and other tire-related conditions. Post-checkup, we provide extensive reports on data to reduce fleet costs, information for easier maintenance of tires, and peace of mind knowing your tire operations are maintained at an excellent standard. Our digital solutions include the Conti Connect Tire Information and Management System that helps increase tire mileage and optimize the fuel consumption of your fleet. Moreover, the system monitors your tires on the road and sends alerts in case of punctures or sudden pressure losses. And once your vehicle comes back to the yard reader station collects data from sensors and transmits it to your fleet team for corrective actions. Conti Connect can also be integrated with your onboard GPS, which allows you to monitor fleet tire performance and receive alerts through our web portal. Vehicles on Conti Connect have realized reduced fuel spend of 3%,
increase in tire mileage by 20%, and better road safety of the vehicles. Let us take care of your tire management so you can take care of your business. Contact us now to know more. तो इसमें आपने कहीं पे देखा होगा that it says it saves your cost by 35,000 ringgits annually. तो जब मैंने भी ये वीडियो देखा तो मैंने कहा भाई ये रिंगिट में तो काम होता है नहीं, ये तो मलेशिया का करेंसी है, why are we putting it here? So the fact is that we are still in process. 3-4 fleets पे भी हमारा ये चल रहा है, but we have not reached a position or a place where we can very conclusively put across कि इतने हजार रुपए की हमने आपको बचत करके दिए. This 35,000 ringgit is what we have concluded in Malaysia market in the fleets there, and that is why we have mentioned here. So this is a offering that is valid for today. Secondly, anyone who wants to understand the 360-degree solution, wants to have a closer look at the different elements of this tubeless thing, on the kiosk, you're more than welcome to come and have a discussion with us. And if there's anything that you would like to ask me or my team, we are accessible. If there's anything that anyone would like to ask now, I'm more than happy to respond. Now there are 3-4 companies in India who are offering AMC for tires. So do you think in near future Continental will be able to provide the AMC? So they take care of the entire tire solutions. So they take care of the entire tire solution, even on the highway support they provide, and the charge on a per kilometer, per tire per kilometer. So don't you think, I mean, the way you have shown the presentation in terms of the technology which you're using, probably there could be one more this thing that you take care of the entire fleet with your team and we pay you on a per kilometer, and this is now the norm. I mean, there are 3 manufacturers I know in India who are doing it. Yes, thank you sir for the question. Absolutely right, because most of the fleets that now I meet, they're like, boss, we are in transportation business. And we are in the business of moving things from one place to other at a profitable margin and grow the business. I don't want to, look into the troubles of tires. Can you take that trouble for me? I'm willing to pay for it also. So this is a feedback that we have received. I cannot commit to you or give you a categorical data or date that by which this is. But I would say, as a fleet management or as an organization who are very, I would say, focused on the fleet management system, trying to develop technologies and solutions which basically help you, that would be the natural evolution. But it will take some time. I think we are also trying to establish our foothold, get some more feedback, try and see what better can we do, because I strongly believe that this is a continuous journey of learning. But yes, in sometime in future, once we have a certain, I would say, understanding, expertise, knowledge, we would definitely want to explore this. Natural evolution, I would say. Okay, if no questions, then thank you so much. And Shweta, back to you. Thank you, Rajneesh. And before we move forward, let me also quickly take a minute to announce that Leaders of Road Transport award ceremony is likely to take place in the first week of March. Nominations are open, so those of you who'd like to nominate, kindly do so in your respective categories. I'll repeat, Leaders of Road Transport Awards for 2023. Nominations are open, likely to take place in the first week of March. And let's quickly move on to our concluding panel, which is on sustainable roadmap for the sector. Now, remember, world is at a very critical juncture, and the Transport Secretary also highlighted the need to mitigate pollution-related concerns
while we are also talking about moving ahead. So moving ahead, but sustainably doing so. Now, various studies have suggested that road transport sector contributes highly to the problem of pollution in the country as well as outside of the country. So how do you really mitigate between building a better future but also building a future which is sustainable in the long run without penalizing the people who are either a part of the ecosystem, who are suffering as a result of the pollution from the ecosystem? It's a challenge that the industry will have to mitigate, and let's understand how it's doing so. Now, let me call upon Shivjit Jaiswal, who's the Director of Highways on Wheels, and Ashwin Agrawal, Partner Safe and Secure Logistics, please, to discuss on the future of sustainability. Ashwin, Shivji, thank you very much for taking time out. This is the concluding panel, and this is also, I believe, the most important one, because we are talking about a sector that is already flagelling. It is suffering due to not having a lot of bottlenecks and not having enough will on an implementation level when it comes to policy making. Although the sector has done extensively and very, very well in the past couple of years, but it continues to mitigate challenges. One of the major challenges that a lot of transporters are now faced with is sustainability. How do you concur with your dream to move towards a more sustainable fleet and fleet operations while also ensuring that you have enough margins? Ashwin, let me begin with you. What sort of steps have you taken in your business to move towards sustainability? Yeah, hi, Ashwin Agrawal, Safe and Secure Logistics. Thank you for inviting us. Okay. Yes, sir, please continue. See, logistics as a transport is divided into various fraternity out here. Are we talking only about trucks, which contains the 85%? Or are we talking about, other businesses also in transport, which is trading in transportation, in warehousing, freight forwarding, or other put together? If we put all these verticals together, I think the logistics industry, all the organized players are all crossing 500 crores of turnover, and they all are doing very well, and which can be seen in the stock market. You name the name of the logistics company, all their stock prices are above, very high. So which sectors are we addressing to so we can discuss about sustainability? I want to talk about not just commercial, but also, passenger vehicles. Well, there's a lot of thrust on passenger vehicles when it comes to sustainability. People are buying more EVs. Don't think the similar effort has been seen on the commercial side of things. And of course, there are challenges as to why the cost of capital is very high. There is not enough charging infrastructure. So first, let's talk about the commercial size. So are we talking about passenger vehicle, which is electric vehicle, which is used as taxi? Let's do that first. Are we doing that Absolutely. First? Okay. So electric vehicles on taxi basis, which is, limited to city, because the available kilometers on an electric vehicles is around 500 kilometers on one charge. And when you go on a hilly section, the 500 kilometers will come down to around 350 kilometers. That if any organized company like, Blue Arrow Taxi, if you must have heard about it, the Blue Taxi which got funding of more than 2,000 crore today, they are putting up their charging station, and all the call centers in Delhi or entire NCR is fully under electric vehicles. So, and I think it's doing very well. Similarly, in Bombay, they're not such a large player with, like something like Blue Taxi, but Uber, Ola, they all are moving into green energy currently. And that is the demand on the requirement of today's economy. Because if we import less of crude oil, our money appreciates from 83 rupees, I think we might come down to 70 rupees if we stop importing the crude oil to currently what we are importing to such a large extent. Okay. All right. And let's talk about commercial sector. Let's talk about the big trucks. Big trucks on the electric vehicles? Absolutely.
So currently in India, the big trucks like Ashok Leyland or Tata Motors or Mercedes-Benz, they do not have any vehicles above 9 tons on electric vehicles. It is proposed. Currently it is not available. The vehicle which is available today is by Mahindra and Mahindra, who's the market leader today in your last mile delivery, who sells around 20,000 of last mile delivery trucks, which he's tied up with all the biggest logistics company in India, like, like I would say Delivery is one of them, Mahindra Logistics is one of them, and DHL is one of them. So it is compulsory if they are taking a warehouse contract of 10 lakh square feet. So they are forced to take minimum 250 last mile delivery vehicles on EV, which is going to reduce your cost of last mile delivery, I think by roughly around 4 to 5 rupees a kilometer. And I think that is doing very well today. And how about buses? Okay, buses also, if we go to see, it is city to city. Now, it is the government subsidy which is taking buses. In Bombay, Switch Mobility by Ashok Leyland has got good contracts. Olectra has got good contracts from the buses side. And I think as per the government norms, I think 90% in the next 4 to 5 years, the vehicle will be converted into electric vehicles, or they will be converted into CNG vehicles, or now proposed, which is Reliance and Adani is eyeing, is hydrogen vehicles. Okay, Ashwin, thank you for that. Thank you for setting the context. I'm told we also have our third panelist who's joined us, Suyansh Gupta, Director, Best Roadways, is also with us. Suyansh, please do join us. Shivjeet, I think it's now clear with what Ashwin said. हम हिंदी में बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. बिल्कुल हिंदी में बात करेंगे. It's now clear with what Ashwin said. उन्होंने कहा कि implementation की बात करें तो commercial side of things मुश्किल लगता है. Passenger vehicles में अभी भी implementation हमें ज़्यादा दिख रहा है when it comes to EVs. मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके अपने experience में, आप क्योंकि road transport network के एक leader हैं, किस हद तक का implementation देखते हैं आप electric vehicles का on ground? बहुत अच्छा हो जाएगा. कुछ दिन में जो मोदी जी और गडकरी जी जो सोच रहे हैं, उनकी जो सोच है उस हिसाब से बहुत जल्दी ही, मेरी कल मीटिंग हो गई थी टाटा वालों के साथ में, उन्होंने बताया कि अप्रैल और मई तक हम 19 टनर की गाड़ी ले आएंगे. सेम लेलैंड वालों से बात हो गई, वो भी जून तक लेके आएंगे एलएनजी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. ओके, तो आपने कहा है कि सरकार से आपको अश्योरेंस मिला है कि जल्दी नए प्रपोजल्स भी क्लियर हो जाएंगे. जी जी ठीक है. और अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके नेटवर्क में कितने लोगों के पास इलेक्ट्रिक फ्लीट है, या आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक फ्लीट है? नहीं, अभी हमारा जो सेगमेंट है सब 42 टनर 35 टनर्स के हैं, तो उसमें तो अभी वो गाड़ियां आई ही नहीं अभी तक. ओके, अभी तक गाड़ी आई नहीं है, तो अभी प्रपोजल है आगे जो कि पूरा हो पाएगा, होपफुली जल्दी इम्प्लीमेंटेशन में आएगा. ऑलराइट, लेट मी आल्सो गेट Suyansh into the conversation. Suyansh, we begin by understanding what kind of momentum we are seeing in the EV space. Now we're talking about, of course, sustainability. No conversation around sustainability is complete without talking about the goals for electrification of the fleet. Now we understand that not a lot of capacities are currently available, currently permissible. Once the government clears and once the operators and the manufacturers, the OEMs start building them, it will be made possible. When we talk about electrification of fleet, do you think we have enough infrastructure at the moment in the country? Good evening, everyone. I think it's like you pointed out the question. The issue is about the ecosystem. Ecosystem is yet to get ready for the interstate highways. If you see the electric charging stations for EVs, even for passenger vehicles, the electric station chargers are not enough right now. But we have intra-city vehicles. We've been doing pilot through Tata Ace. There is a EV introduced by Tata Ace for like 1 tonner, 1.5 tonner vehicles. For last mile delivery, we've been doing some pilots on that. But for when it comes to long haul vehicles, I think there is a long way to go right now. And there are a lot of models, I think, in the offing. But right now, nothing has been materialized so far. And Mr. Gadkari also focuses on LNG and hydrogen cell quite frequently, more than electric trucks. I think LNG and hydrogen cell vehicles
would have a better acceptance going forward for long haul vehicles. But so far we have not seen any, at least for me, at least for my company, we have not seen any progress on the long haul side of electric vehicles. Okay, thank you for that honest assessment. Ashwin, you know, one of the challenges that a lot of people, when we talk about EVs, is that we have not perhaps talked about what happens to the batteries, because EVs essentially run on batteries and those critical minerals are hard to find in the country. So perhaps fully electrification may not be the road ahead when it comes to sustainability. What, according to you, should be the sustainable solutions that this country should be opting for? Says India is the only country in the world where all the alternate source of energy is allowed out here. So I would say the OEMs like Tata Motors or the other ones, so they are making vehicles on CNG, they are making vehicles on LNG, they are making vehicles on hydrogen, they are making vehicles on your electric vehicles, they are making vehicles in all sorts of methanol. So they want basically the crude oil to be imported, which has to be curbed. So that is the reason in our country, all sorts of fuel is welcomed, all alternate source of energy is welcomed, and that is how all your OEMs will start manufacturing all the kinds of vehicles available. And do you think the steps that they're taking at the moment should be enough to meet an electrification dream for India? Do you think the OEMs and the thrust that they have seen towards hybrid vehicles, your totally electric vehicles, is that thrust enough? See, hybrid is a different technology and it is patented only by Toyota in the world. So hybrid, I have not heard about in the commercial segment, but in your personal cars and your last mile delivery, in city, yes, not depending upon availability of battery or charging. उस कंडीशन को, उस एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए क्या ये पॉसिबल भी है कि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें? क्या हम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की जो बात करते हैं कि ऊपरी तौर पर है या ग्राउंड लेवल पे भी आपको कुछ कॉन्वर्सेशंस दिखती हैं, सुनाई देती हैं? I think right now the EV transition or the EV concept is a little bit of a sell, like if it gives you a competitive advantage. If you tell your customers that you're EV friendly or you have some net zero emission targets, it's more like a branding. I would say it's more like a luxury right now, and it is possible through like large fleet operators or transporters which are more organized than the most people. But going forward, EV or LNG or hydrogen is the future. EV has got the first mover advantage in passenger vehicles, but I would believe that LNG or hydrogen cell going forward could have a big impact in reducing our crude oil imports, as Ashwin Agarwal correctly pointed out, that we have a huge deficit, huge dependence on the imports of crude oil, which would really have a positive impact if we focus our energy. Not just pollution-wise, already cities are getting polluted. It will have a positive impact on the pollution, reducing the carbon footprint, as well as reducing the import bill of our economy. Okay. Ashwin, budget is around the corner.
बजट आने वाला है 1 फरवरी को और फेम 3 रिलेटेड अनाउंसमेंट्स भी पेंडिंग है। क्या सब्सिडीज जो अभी तक मिल रही थी ईवी को वो मिलती रहेंगी? क्या सब्सिडीज रिटेलर्स को मिलेंगी, हमको मिलेंगी अडॉप्ट करने के लिए ईवी, जो कि ग्राहक हैं उनको मिलेंगी, या मैन्युफैक्चरिंग साइड मिलेंगी? आपको क्या लगता है कि सरकार को इस वक्त किस चीज पे फोकस करना चाहिए टू मेक इट चीपर फॉर पीपल टू ओन अ कार विच इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, और टू मेक द इंफ्रास्ट्रक्चर better perhaps? What are you hoping FAME will do? No, I am trying to understand, are we focusing on electric vehicles or are we talking about So we're sustainability focusing on the of ecosystem more. ecosystem where EV on a commercial sector is still a vision. It is not currently available apart from the last mile delivery or one-tonner vehicles. Other vehicles are still to come. It is like a science movie that these vehicles will be available. So currently it is not available. So if you're talking about sustainability of transport, it's a different question. If you're restricting ourselves to EV, so then it's a different question. So what are we actually looking at currently? Currently, I'm hoping if you could tell us if you have any expectations from the FAME policy, which is mostly on the passenger side of things. On the passenger side of things. Then I'll come to commercial. Give me some time to come to commercial. No, that's what I'm asking you. See, on the passenger side of things, as I said earlier, whether it's your passenger transport, like people like us, so Uber, Ola, and your personal cars, I think that message is loud and clear to all the Indians that, boss, we need to save our country. We don't want to go like Pakistan and Bangladesh and Sri Lanka. Our money has to be strong. So I think everybody is trying to adopt EVs. And especially in a state like UP, if you go to see, all the auto rickshaws are also in electric today. If you want to go anywhere from anywhere in UP, it's all auto rickshaws are EV. So for us, I think adoption of EV on a personal car and on a taxi front, it will be very high. It will be very fast. So that is from the EV point of view, from the passenger car. Similarly, you're talking from the bus point of view. Bus point of view, that is by the government, and government has, I think all cities, the major A plus city and the B plus city, have already given 1,000 truck bus electric orders to companies like Electra, PMI, Switch Mobility, Tata Motors, who are all already on the implementation and supplying of the electric buses. Fair enough. And let's talk about the commercial side of things also. Since we've talked about passenger side, we do see that there is a faster adoption on the passenger side, obviously because there is an existing ecosystem. But when it comes to buses specifically, there are a lot of placements of orders, CNG buses ka, EV buses ka. Do you think that is also likely to go up now? If yes, by what percent? As the transport minister who was here earlier, he said 2026, all the Bombay buses would be either CNG or it would be electric or it would be hydrogen. So I think that they will achieve their target in the next 2 to 3 years, which is not, we're not seeing it very far, because all the manufacturers today, the newer manufacturers, are all implementing only EV vehicles. All right, fair enough. Thank you, Ashwin. शिवजी, जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की या सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करने की, आपको ट्रांसपोर्टर होने के नाते आपको क्या लगता है कि किस तरीके का अडॉप्शन आप देख रहे हैं मार्केट में सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को लेकर? अभी फिलहाल मुंबई या कोलंबो के मार्केट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहे कि ईवी स्टेशन आ गए हैं या एलएनजी के स्टेशन आ गए हैं, बहुत कम आए हैं। और क्या इस बारे में लोग बातचीत करते हैं? क्या इस बारे में कोई चर्चा भी हो रही है कि नहीं हो रही है? यस, चर्चा तो हो रही है, काफी चर्चा हो रही है। किस लेवल पे चर्चा हो रही है? लोग आपस में बात कर रहे हैं या आप जाके सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार आपसे आके बात कर रही है? सरकार से तो बात हो रही है, बट हमारी तो डायरेक्ट बात नहीं हो रही है। बट जो हमारी जो कंपनियां हैं, जो जहां से हम मटेरियल उठाते हैं, वो हमें इनकरेज कर रहे हैं कि आप एलएनजी व्हीकल्स या ईवी व्हीकल्स ये लगाइए करके, वो हमें कर रही हैं। All right. And Ashwin, coming back to you, I want to focus this time around on the commercial aspect of things. In your assessment and your understanding of reading the market, how far are we from achieving a dream of a more sustainable future when it comes to, and you said it's like a textbook thing right now, it's a science fiction at the moment, because we're talking about a realm we have not touched just as yet. When it comes to sustainability of a commercial fleet in near future, maybe 10 years from now, 15 years from now, what is your vision of it? Commercial vehicles currently run on diesel. So are we talking about those vehicles currently for Yes, the sustainability? Sir. Absolutely, sir. Okay. So
I would say 10 years back when Modi was elected as the PM of India, okay, he went around all the countries in the world requesting them to have a factory in India and something called Make in India. His effort was there, but he was not successful that time because the cost which was projected by the committee that Indian logistics cost is 13 to 14% of the GDP, which was a wrong figure and a wrong thing, which I think Mr. Nitin Gadkari was appointed as the transport minister, and luckily we have him from the last 10 years. And I think he has done a marvelous job for this country. And so I'm a very positive person, so I would say that it is not a question of sustainability out here. What you can see in a vehicle today, every document is available on Vahan API. So today you want to search of any vehicle, whether the dues are paid, not paid, it is available. A driver verification is available on Sarathi. The entire API is available. Your FASTag data, so you can track any vehicles going from point A to point B on a FASTag data. The road in India which has been implemented like Bombay to Delhi, earlier our truck used to take from 5 to 6 days, currently we reach in 3 days. Plus the warehousing where the loading and unloading the vehicle used to not get unloaded for 2 days, 3 days, 4 days. Now the warehouse space which has increased from 25,000 square feet to 25 lakh square feet for all the bigger corporates. The vehicle is getting unloaded in 3 hours. So the vehicle which was running from Bombay to Delhi was around 5,000 kilometers. I think Suresh is the market leader in Bombay-Delhi route. He would confirm, I think all his vehicles should run around 7,000 to 8,000 kilometers currently. Are they running 7,000 to 8,000 kilometers? I think in fact more than that. We have like 3 round trips, so we around 9,000 kilometers. So that is a remarkable achievement for a transport operator who we couldn't even do 5,000 kilometers and we are doing 9,000 kilometers. So I don't think there is a chance of sustainability. There is enough, it's only an efficiency of the vehicle which has to be utilized. If you burn kilometers, you will make money. And I'm pretty much sure an organized player like him, he must be, all his vehicles would be in profit situation today. It is not in a loss. So when we talk about sustainability, the two aspects of sustainability that we were hoping to discuss through this panel, of course, one is the sustainability of the transporters. The other is the sustainability when it comes to environment, right? So focusing on both of that, since now Ashwin has also talked about sustainability of transporters. Suresh, we have in the past 1 or 2 hours talked about all the bottlenecks, right? So we have talked about essentially the cost of fleet, which is now coming down. It was projected to be about 15%, is now in the current range of 8.9 to 9%, hoping to bring it to 8%. That is what the government wants at this point, right? The logistics cost. In your assessment, what will be the challenges, apart from all the existing bottlenecks around toll taxes and interstate passage? What other challenges are you facing as transporters? I think as the earlier panelist, Mr. Malkit Singh was pointing out, it is the roadside corruption, I would say, is the biggest challenge. The petty corruption that still exists. But I think going forward, the future looks very bright. Ashwin ji was pointing out to the turnaround time that has significantly improved with the advent of FASTag and also better vehicles and also abolishment of different state taxes. So that has significantly brought down the turnaround time for us. And going forward with the opening of the Bombay-Delhi Expressway, I think that would even further improve our turnaround time and efficiency. And if you add together the CNG aspect or the electric or the LNG or any other sustainable method of transportation, so it's going to just have a compounding effect on the turnaround time as well as on the profitability and on efficiency. So everybody wins in this case. Like environment is also less polluted, and we have better profit margins.
drivers are happy, so everybody wins in that case. All right, all win-win sort of a situation, Absolutely. hopefully in future. And before I conclude this discussion, let's also spend a minute, Ashwin, I want to come back to you. Let's spend a minute to understand challenges, some of those challenges that you also talked about. What are your expectations from the government? A new government perhaps, or an existing government will come back in power. When it comes to policy measures, what new policies would you be hoping government will roll out to ensure sustainability for this sector? The government we are talking about, Nitin Gadkari, I think is a fantastic transport minister. May or may not be, sir. May or may not be, but as of now he is there. And I think what he did firstly was the best thing. A vehicle of a 9-tonner would be loaded for 12 tonners. So automatically he increased the efficiency that the same number of vehicles can carry more load. That is one thing which he did. Secondly, that payment of your government dues. Today you can pay all your permits and other expenses and taxes online. So you don't have to go through any agent in between and delay your time. So that is again one more very big efficiency. And I would say the highways, which is supposed to be the best in the country, which we could never dream of, which we are seeing today, including your Atal Setu, which is there, and your Bombay-Pune Expressway, your Bombay-Delhi Expressway, your Bombay-Bangalore Expressway, which will cut down your delay in transportation out here. And I think we are seeing all efficiency. I think by this 2024, I think it should be a golden year for transport, where then all the expressway will be implemented, will be executed. So I think there is no question of sustainability out here. I think all these single truck owners will make enough profit. And what we want from the government is very simple out here. It's a basically mismatch of demand and supply. So like how abroad they have is 4 zones: Bombay, Delhi, Calcutta, Chennai, or Hyderabad, whichever is there. So like 50 lakh square feet, one warehouse there, where loading and unloading can take place. So the hub and spoke movement, if this happens, I think everybody makes money. The vehicle travels 12,000, 14,000 kilometers. It is what we really require is a large scale warehousing and hub and spoke movement in India. And that is which will be the very game changer. The logistics cost might come down from 9%, which they're projecting, to around 6 to 6.5%. That is the hope. And before I conclude, शिवजीत, आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम challenges की बात करते हैं, I think आपके दोनों panelists ने बहुत अच्छे से challenges को describe किया. ये भी बताया कि सरकार से expectation क्या है, implementation of national logistics policy, the hub and spoke model, how will that change the environment. आपसे जानना चाहूँगी, आखिरी सवाल है ये from the panel. आपकी क्या expectations हैं, number one, सरकार से. दूसरा, एक कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट हमने सुना पिछले 4 पैनल्स में, 3 पैनल्स में, और पिछले 3-4 जगहों पे जहाँ पे हम लोगों से बात करके आए हैं. कई लोग कहते हैं कि, और जो बड़े ऑपरेटर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम बेटर अडॉप्ट करेंगे टेक्नोलॉजी को, हम कोशिश करेंगे अपनी ड्राइवर्स को सेफ रखें. और कहीं जो छोटे एक तरीके से ऑपरेटर्स हैं वो सस्टेन करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं. अगर एक फेयर पिक्चर में अंडरस्टैंड एनालाइज करना चाहूँ आपसे, आपने इकोसिस्टम को रीड किया है, कहाँ पे आप बैलेंस पाते हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रांसपोर्टर स्ट्रगल कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है, या फिर आपको लगता है कि अब स्ट्रगल अभी भी जारी है, क्योंकि 80 to 90% ऑफ देम आर एंटरप्रेन्योर्स एंड फर्स्ट टाइम ऑपरेटर्स? वैसे तो मैं 2018 से इस फील्ड में हूँ, मैं एकदम फ्रेश हूँ, बट ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें कोई प्रकार का चैलेंज नहीं है. अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर सबसे आसान बिजनेस है तो है ट्रांसपोर्ट. सबसे हायर टैक्स पेयर है हम. जब हम गाड़ी परचेस करते हैं तो 28% जीएसटी भी हम देते हैं, टीसीएस भी हम देते हैं. जब हम ऑयल परचेस करेंगे तो उसके ऊपर टैक्सेस भी हम देते हैं. बट इसके पहले और लोग ने बोला कि, काफी सीनियर्स लोग थे, उन्होंने बोला कि यह अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है. बट यह मैं मानता हूं कि बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस नहीं है, एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है. हमें बिजनेस करते आना चाहिए. हम बिजनेस को किस प्रकार से करते हैं यह उसके ऊपर निर्भर होता है. Right. बहुत अच्छा बिजनेस है. I think extremely positive words coming in there from Shivjeet. Gentlemen, thank you very much, all three of you, for taking time out. Thank you for joining us on this panel discussion. I think the way I'd like to conclude it is that while Shivjeet says बहुत बेहतरीन business है, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है sustain कर पाना. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं 2018 में इस फील्ड में आया था
0% एक्सपीरियंस था मुझे ट्रांसपोर्ट में। हमने 19 गाड़ी लेके शुरुआत की। आज मेरे पास 400 प्लस गाड़ियां हैं और जो गाड़ियां हैं सब मेरे पास 4825 मतलब 12 टायरा, 14 टायरा, 16 टायरा, 18 टायरा, जबकि 0% नॉलेज था। इन कोविड पीरियड में भी हमारा बिजनेस ने हमने ग्रो किया है। हम 2018-19 में आए 8.5 करोड़ के बिजनेस के साथ में। लास्ट ईयर हमने 107 करोड़ पे क्लोज किया है। इस साल की हमारे टारगेट 200 करोड़ का है। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि यह बिजनेस अच्छा नहीं है? वेरी गुड बिजनेस है। हमें खुद ये बिजनेस करना चाहिए, हमारे बच्चों को भी इस बिजनेस में डालना चाहिए। इस बिजनेस की इतने आसान बिजनेस मैं तो बोलता हूं कोई और नहीं है। थैंक यू। Thank you. All right. I think I would want to be a transporter next. It sounds more lucrative a business to me. But to conclude this, and as a part of the vote of thanks, you know, this is a crucial time in the connectivity for the entire country. We are heading into elections. It's also crucial because the current government has been in power for 10 years. We've seen lots of changes. Some of those changes we talked about here when it comes to the cost of operations, which has now come down drastically. The freight cost has also come down. New assessments tell you that logistics cost is just under 10% at the moment, from 15 to 16% about 10 years ago. So those changes, of course, transporters have seen. What my general sense of the room is that people in Bombay and transporters in Bombay perhaps are more prosperous from many parts of the country. We were in Jaipur, and unfortunately there the environment was more pessimistic than what it is in this part of the country. What does it tell you? That experiences are very diverse in different parts of the country, that different operators in different parts of the country have a different sense of what the government is doing. So perhaps not everybody has been able to reap those benefits of the policy measures. That should be the goal of the government. The goal of the government should be to reach all possible people at all possible time in the next year. 10 years perhaps is a long course of time, and if the government does come back for the next 5 years, its focus should be last mile, and the last person out there who should be a beneficiary of the sector should be catered to. And with that, I think we'll conclude this wonderful discussion and wonderful conclave. Thank you very much for taking time out and for joining us here. I take great, immense pride, and I also encourage you all to kindly register yourself for the Leaders of Road Transport Awards, which is likely to take place in the first week of March, and hopefully we'll see many of you back in Delhi. Thank you very much. And the tea is served. Thank you. First time in Indian archaeology or even in the world archaeology इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हमने वहाँ सनौली में, और इस एक्सपेरिमेंट में जो चैरियट का पूरा रिमेंस था उसको हमने एज इट इज़ कट करके प्रिजर्व करके और उसके बाद उसको लिफ्ट किया। जो सनौली के जो चैरियट है दैट इज़ अर्लीस्ट फिजिकल एविडेंस ऑफ द वर्ल्ड। हम महाभारत को पिन पॉइंट डेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई इंस्क्रिप्शंस जब तक नहीं है या एक्सकविशन में हम पिन पॉइंट डेट नहीं कर सकते। ओसीपी कॉपर होर्ड कल्चर जो हमें सनौली में मिला है
और पूरे गंगा यमुना दोआब में ये प्रिविलेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि उस समय का जो महाभारत में वर्णित है हीरोइक कल्चर, वो कहीं ना कहीं इनके साथ मैच करता है। द होल थ्योरी जिसको हम आर्यन कहते हैं, आर्यन इन्वेजन कहते हैं, इस थ्योरी के पीछे बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व थी कि इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से देखा जाए वेस्टर्न आँखों से। टोटल थ्योरी जो बिल्ड किया गया था वो हॉर्स, चैरियट, वेपन्स और इसके अराउंड बिल्ड किया गया है, क्योंकि ये किसी भी हड़प्पन साइट से हमको नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने ये थ्योरी बिल्ड किया। दूसरा, जब मोहनजोदारो का एक्सकवेशन हो रहा था तो बहुत सारे वहाँ स्केल्टन मिले थे, उसके आधार पे भी उन्होंने ये थ्योरी बनाई कि आर्यंस आए और इसको इन्वेड किया। पूरी आर्कियोलॉजी जो है वो मटेरियल कल्चर पे बेस्ड है, इसमें कोई कंटेमिनेशन ज़्यादा नहीं की जा सकती है, उसका स्कोप नहीं है। Namaste, Jai Hind. You're watching the ANI podcast with Smita Prakash. Thank you for liking, subscribing, and sharing this podcast with people who you think will be interested in these conversations. Today, it's all about India's past. Recent excavations in a place called Sinoli has put a question mark on the Aryan invasion theory. Western scholars claimed that till now, chariots and weapons came to India with the Aryan invasion. But the recent excavations at Sinoli in Uttar Pradesh go back nearly 4,000 years. And here, there are evidences at this archaeological site in Sinoli which show that a warrior tribe once lived around 1900 BCE. And this kind of debunks the Aryan invasion or the Aryan migration theory. To discuss this, we have in our studio Dr. Sanjay Manjul, Joint Director General of the Archaeological Survey of India. We spoke to him about the excavations at Sinoli and Rakhi Gadi and others in which he was involved, including what is termed as the discovery of the century, the chariot of Sinoli. Dr. Sanjay Manjul, thank you so much for coming to the studio. We have a lot of questions. My team also had a number of questions. पूछने के लिए कि क्या क्या मिला, वी हैव टू फाइंड आउट कि सिलोनी में क्या था, क्या मिला उन्हें, चैरियट मिल गई, चैरियट क्या है, व्हाट हैपेंड, वाज इट अ हॉर्स, वाज इट अ बुल. सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क यू एंड सो लेट्स गेट क्रैकिंग. पहली बात तो सिनौली में, एज आई सेड, देयर इज अ लॉट ऑफ should I say curiosity or should I say interest कि क्या मिला है, does it debunk the earlier theories, the new findings that you have found, और कब से यहाँ पे digging start हुई थी, और and when did you really figure out that you're reaching some conclusions which are going to debunk earlier theories? Nice. सबसे पहले मैं thanks कहना चाहता हूँ कि it's a good forum to discuss. I have seen a lot of podcasts of you. I'm really admirer of this podcast. Thank you so much. So thank you very much for calling me. Actually, if we talk about the Sinoli is really a very, very important site in Indian archaeology. Sinoli का जो excavation शुरू हुआ वो 2005-06 पे फर्स्ट टाइम एकाएक पेपर में न्यूज़ आया और वहाँ के विलेजर्स ने कुछ पॉट्स और कुछ चीज़ें उनको मिली थी, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम वहाँ एक्सकवेशन के लिए गई, एंड दे हैव एक्सकवेटेड 12 months रेगुलरली इन 2005-06 एंड दे हैव गॉट 116 burial, बट अनफॉर्चुनेटली many of the things missed out. क्यों, मतलब जब बेरियल मिला तो मतलब देवर वहाँ पे हैबिटेशन था कि बंजर ज़मीन? ये पूरी खेती की ज़मीन है, जो लोकल लोग खेती कर रहे हैं. और उसमें कुछ चीज़ें तो डिस्ट्रॉय भी हुई हैं क्योंकि खेती ऑलरेडी प्रिविलेंट है, अभी आज भी खेती हो रही है उसके चारों तरफ. लेकिन उस एक्सकवेशन में कुछ चीज़ें सही ढंग से पहचानी नहीं गई, और कुछ चीज़ें जो एक्सकवेट हुई उसकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो पाई. जब मैं एक्सकवेशन कर रहा था, एक साइट है बरनाबा, जिसको बरनावत भी कहते हैं, जिसका उल्लेख महाभारत में भी है कि लाक्षागृह शायद वहाँ बना होगा.
तो वो लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सनौली से. This is all in Haryana. हाँ, नो इन यूपी. इन यूपी. हाँ. तो हम वहाँ एक्सकवेशन कर रहे थे और स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग भी दे रहे थे, एक्सकवेशन, हाउ टू डू द एक्सकवेशन, हाउ टू इंटरप्रेट द ऑल आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स. तो उस दौरान हम बार बार सनौली और उसके आसपास करीब 40-50 किलोमीटर में एक्सप्लोरेशन कर रहे थे. ड्यूरिंग दैट टाइम आई रियलाइज़ कि जो सनौली एक्सकवेशन हुआ है उसमें देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल अगेन टू डू. फिर हमने एक ट्रायल डिगिंग प्लान किया कि वी हैव टू टेक अ ट्रायल डिग टू नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द साइट विच हैज़ बीन डन अर्लियर. जहाँ वो बेरियल्स मिले थे. यस. ओके. ह्यूमन बेरियल्स थे? क्या थे? ऑल आर ह्यूमन बेरियल्स. तो उसमें क्या था? मतलब आई बिलीव देयर वाज ग्रेन एंड थिंग्स लाइक दैट, कि पॉट सिरेमिक कुछ मिला. एक्चुअली अगर पूरे प्रोसेस को आप देखें तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बरियल ग्राउंड, जो लगभग 25 एकड़ के लैंड में फैला हुआ है. और जो पहले एक्सकवेशन हुए थे उससे 100 मीटर डिस्टेंस पे कुछ वाटर बॉडीज़ भी हैं वहाँ पे. तो हमने एक्सप्लोरेशन और उसके दौरान ये प्लान किया कि दिस प्लेस मे बी द इम्पॉर्टेंट प्लेस to see the extension of the burial and we got some luckily 10 by 10 मीटर बाई 10 मीटर के ट्रेंच में हमें 3 चैरियट मिले. साथ साथ जो बरियल के लिए पिट खोदा जाता है उस पिट में देयर इज़ अ बॉक्स लाइक कॉफिन, और उसमें 4 लेग थे कॉफिन में, और उसमें ये डेड बॉडी को रखा गया था. और उनके साथ बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बरीड की गई जो ऑफरिंग के तौर पे, क्योंकि जब वो दूसरी दुनिया में जाएं तो उनको वहाँ वो सारी चीज़ें मिले जो इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया में. ये तो जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में और हड़प्पन सिविलाइजेशन में तब भी वैसे ही किया जाता था. कंटेम्परेरी, मोस्ट ऑफ द कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन में लगभग इसी तरह के प्रोसेस, बरियल प्रोसेस. तो आपने उसको डेटिंग की उसकी? ऑफ कोर्स AMS और C14 डेट जो हमने किया उसमें 2200-2300 BC से लेके और 1800 BC तक के डेट्स हैं वहाँ पे, और ये बरियल प्रोसेस होते रहे. तो जो एक एक बरियल था वो इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि वो बरियल है, बरियल तो हड़प्पा में भी मिले हैं और हड़प्पन साइट्स में भी हमने बरियल, कालीबंगा में, राखीगढ़ी में, बहुत सारे प्लेसेस पे बरियल एक्सकवेट किया है जो अर्लियर देन सनौली भी है और कंटेम्परेरी टू सनौली भी है. बट सनौली ग्रेव इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि उसमें जो ऑफरिंग की गई है उसमें चैरियट है, उस ऑफरिंग में शील्ड है, उस ऑफरिंग में चेस्ट शील्ड है, उस ऑफरिंग में हेलमेट है, उस ऑफरिंग में तलवार है, उस ऑफरिंग में मशाल है. सो ये, और साथ साथ जो पॉट हाउस में रखे गए हैं उसमें ग्रेन्स, लिक्विड और चीज़ें भी ऑफर की गई हैं. तो ये सिग्निफिकेंट क्यों होता है, ये समझाइए हमें. ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस तरह के बरियल अभी तक एक्सकवेट ही नहीं हुए थे. और इस एक्सकवेशन के बाद आप उसके दूसरे पक्ष को देखें तो वो सामाजिक स्थिति को दिखाता है, बिलीफ को दिखाता है, सामाजिक बिलीफ को दिखाता है. सेटलमेंट में अगर चैरियट है तो उसको बनाने वाले भी होंगे, उसको जानने वाले भी होंगे, उसको यूज़ करने वाले भी होंगे. अगर वेपन्स है तो इट्स इंडिकेट द वॉरियर ऑल्सो कि योद्धा है. हाँ, योद्धा है. तो अगर आप कंटेम्प्रेरी लिटरेचर देखें, आइदर इन द वैदिक लिटरेचर और द लेटर वैदिक लिटरेचर लाइक महाभारत, रामायण, वॉरियर के बिना तो कुछ है ही नहीं. पूरा इंडियन हिस्ट्री वॉरियर, वेपन्स और योद्धाओं के बिना आप पढ़ ही नहीं सकते. जी. इन अदर अगर पार्ट आप देखें तो जो इंडियन हिस्ट्री को या इंडियन आर्कियोलॉजी को जो नरेट किया गया वो ये कहा गया कि यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं थी, इसलिए जब चैरियट इंडिया में आया, हिटाइट, और उसके बाद जब चैरियट इंडिया में लाया गया वेपन्स के साथ साथ, तब हमने जाना कि युद्ध क्या होता है और टेरिटरी क्या होती है. और तो द आइडिया वाज कि चैरियट्स इंडिया में थे नहीं, तो जो हम लोग बचपन से जो
पढ़ते आए हैं माइथोलॉजी के बारे में, इसलिए उसे डिबंक किया जाता था कि ये तो होता ही नहीं था इंडिया में, क्योंकि ये तो आर्यन सिविलाइजेशन लेके आया, ये इंडिजिनसली इंडिया में था नहीं। पर सनौली में जो आपने पाया वो दैट प्रीडेट्स द आर्यन पीरियड। बिल्कुल। अब आप देखें द होल थ्योरी जिसको हम आर्यन कहते हैं, आर्यन इन्वेजन कहते हैं या आर्यन माइग्रेशन कहते हैं लेटर ऑन, ये थ्योरी कैसे बनाई गई, इस थ्योरी के पीछे बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व थी कि इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से देखा जाए वेस्टर्न आँखों से। इसलिए एक बेंचमार्क फिक्स किया गया कि ये जो आर्यन थ्योरी बनाई गई वो 1500 बीसी के आसपास अगर आप देखें तो कहेंगे कि 1400-1500 बीसी के बाद आर्यंस आए और उसके बाद वेद लिखा गया, उसके बाद लेटर वैदिक टेक्स्ट आए, और उसके पहले जो चीज़ें थी वो इंडिजिनस थी और उसमें वेदों का कोई मतलब नहीं था निश्चित रूप से, क्योंकि एक बेंचमार्क बनाया गया। उस बेंचमार्क ने तो जो भारत के जो मूल निवासी हैं वो भी एक टर्म कंट्रोवर्शियल है, बिल्कुल पर मतलब कि प्री आर्यन एज में ना हमारे पास किताबें थीं, ना हमारे पास लिखने का साधन था, ना हमारे पास चैरियट्स थी, ना घोड़े थे, ना हमारे पास शील्ड्स थी, ना हमारे पास तलवार था। बिल्कुल। हाँ, ये दिस वाज द आर्यन एक्सप्लेनेशन। यस। ओके। तो अगर आप देखें जो अभी जितने भी रिसर्चेज हो रहे हैं या जो साइट एक्सकवेट हुए हैं और इंडियन क्रोनोलॉजी को देखें, इंडियन साहित्य को देखें, इंडियन तो और हमारे यहाँ जो एक परंपरा है उस परंपरा को भी अगर आप देखेंगे तो साफ दिखता है कि उसकी एक कंटिन्यूटी है, उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है उस कंटिन्यूटी में। इसलिए आज हम ये मानते हैं कि जो वैदिक कल्चर है और वैदिक कल्चर में जो कुछ नरेट किया गया है, पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि सरस्वती से सिंधु के बीच की का जो पूरा लैंड था वो लैंड वैदिक कल्चर में डिनोट होता है। वही सारे रिवर्स उसमें वेद में नरेट किए गए हैं। खासकर आप देखेंगे सरस्वती को 70 टाइम्स बोला गया है, सिंधु को 40 टाइम्स बोला गया है। कहाँ पर? वेद के ऋचाओं में। और सरस्वती का नामो निशान नहीं है। हाँ, नहीं, सरस्वती को हमने उस समय लोगों ने इसको कहा ये मिथिकल रिवर है। लेकिन वो जो सरस्वती का बेड है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है बेड, और उसके किनारे किनारे हमें एंशियंट सेटलमेंट्स, हड़प्पन सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं, तो हड़प्पा और जो सरस्वती यानी इंडस सरस्वती का जो बीच का एरिया था वो फर्टाइल प्लेन था और वहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन के सारे साइट्स हमको मिलते हैं। आप सरस्वती के किनारे किनारे सारे साइट्स मिलते हैं, लगभग हर 5-10 किलोमीटर के बाद एक साइट आपको मिलेगा। हजारों साइट, 1200 से ज़्यादा साइट आप इंडियन सरस्वती के किनारे अभी तक ट्रेस हो चुके हैं, और जिसके कई साइट एक्सकवेट हुए हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, बिंजौर जो पाकिस्तान बॉर्डर तक है, उसके बीच में अनेकों साइट। गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके ऊपर हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक वाला एरिया है। बिल्कुल। और इधर फिर कोस्टल एरिया में आप चले जाएं, गुजरात कोस्ट में तो धौलावीरा जैसे साइट्स हैं, और उस लोथल है, बहुत सारे साइट्स हैं। कालीबंगा आपको राजस्थान में जहाँ सरस्वती और दृश्वती रिवर मिलती है वहाँ पे कालीबंगा है। और उसके आगे जब जाती है तो बिंजौर है, और कई ऐसे साइट, बरौर है, बिंजौर है, और ऐसे कई साइट्स वहाँ पे, जिसमें कालीबंगा एक महत्वपूर्ण साइट है जिसको हम सिटी साइट कह सकते हैं, अर्बन साइट कह सकते हैं। हाँ, जहाँ पे वो सुएज वगैरह उनके बिल्कुल वहाँ अर्लीस्ट फार्मिंग और उसके एविडेंसेस वहाँ पे मिले हैं। ड्वेल फार्मिंग के एविडेंस वहाँ मिले हैं। पहली बार हमें खेत में फैरो मार्क्स मिले थे कालीबंगा उसका मतलब में। प्लाउ था उधर। हाँ, प्लाउ था। और वैसे ही जो
राखी गढ़ी प्लाव साइट नहीं है। मिला कोई? नहीं, प्लाव के मॉडल्स मिले मॉडल्स हैं, मिले हैं, क्योंकि हाँ। नॉर्मली सील में? क्या, हाँ नहीं सील में नहीं, टेराकोटा मॉडल्स टेराकोटा, मिले हैं। ओके। और सील में प्लाव जैसा नहीं मिला है, लेकिन सील में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिपिक्शंस हैं जिसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ट्रेड में कितना इन्वॉल्व थे हड़प्पन्स, और वो ट्रेड रूट कहाँ तक, क्योंकि मेसोपोटामिया में और उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ सील्स मिले हैं। हाँ। बहरीन में हमें इंडस सेटलमेंट मिला है हमें, तो ऐसे पूरा ट्रेड लिंक भी अगर देखें तो हमारा बहुत उन्नत था उस समय। ये टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो 2600 से लेके और 2000 BC तक ये अपने पीक पे था। पर जब आपने ये सब किया, एक्सकवेशन किया इन एरियाज में हड़प्पा ने, तब तो कोई कंट्रोवर्सी उठा नहीं, पर जब सिनौली की बात उठती है तब ये पूरा आर्यन माइग्रेशन, आर्यन इन्वेजन थियोरी जो है वो उलट पुलट हो जाता है। ज़रा ये समझाइए कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बात, टोटल थ्योरी जो बिल्ड किया गया था वो हॉर्स, चैरियट, वेपन्स और इसके अराउंड बिल्ड किया गया। ये पूरी थ्योरी बिल्ड की गई थी कि आर्यन, क्योंकि ये किसी भी हड़प्पन साइट से हमको नहीं मिल रहा था, इन चीज़ों को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने ये थ्योरी बिल्ड किया। दूसरा, जब मोहनजोदारो का एक्सकवेशन हो रहा था तो बहुत सारे वहाँ स्केल्टन मिले थे, उसके आधार पे भी उन्होंने ये थ्योरी बनाई कि आर्यंस आए और इसको इन्वेड किया और फिर ये। तो इस थ्योरी के कंट्राडिक्टरी क्या हुआ, जब ये चैरियट मिला तो अस्को परपोला और जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये पहले कहा था कि 1400-1500 BC में आर्यन यहाँ आए, उन्होंने तत्कालिक रूप में, जैसे आनंद फानन में उन्होंने अपनी थ्योरी चेंज की। उन्होंने कहा कि नहीं, हो सकता है कि ये जो माइग्रेशन है, आर्यन माइग्रेशन 2000 BC और 1800 BC के आसपास हुआ होगा। तो ये जो हरिडली इम्पैक्ट हुआ वेस्टर्न स्कॉलर्स के बीच में, हरकम मच गया कि ये क्या मिला, ये ऐसी चीज़ें मिल गई जो पूरी थ्योरी को अभी तक जो बिल्ट हुआ था, जितनी चीज़ें लिखी गई थी उसको तो बिल्कुल ख़त्म कर रहा था। ये एक नई चीज़ आ रही थी। तो कई लोगों ने, कई स्कॉलर्स ने ये कहा कि नहीं, ये चैरियट तो हो ही नहीं सकता, ये तो कार्ट है, चैरियट नहीं है। अच्छा, कार्ट का मतलब जो मवेशी है, हाँ, उसके साथ जुड़ा हुआ, हाँ, कार्ट। लेकिन चैरियट जो है वो सिर्फ घोड़े के साथ, घोड़े के साथ होता है। दूसरा, चैरियट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि उसका जो शेप है ये स्मॉलर साइज होता है। वॉरियर के लिए चैरियट डेवलप हुआ और चैरियट का इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड, चाहे वो आपको हिटाइट का वार हो, हिटाइट और एम्सस का वार हो, जो कुडोस का वार हम कहते हैं, उसकी पूरी थ्योरी चैरियट पे है। उसका जो जीत हुई वो लाइटर चैरियट और ज़्यादा चैरियट था, उसकी जीत हुई। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें तो लगभग 2000 BC के आसपास जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का, हड़प्पन्स कार्ट भी डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे 2000 तक आते आते चैरियट भी डेवलप होने लगा। जब चैरियट डेवलप हुआ तो लॉन्ग डिस्टेंस वॉर डेवलप होंगे, क्योंकि तब तक आप शॉर्टर डिस्टेंस पे वॉर कर रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है। तो जब शॉर्टर डिस्टेंस पे होगा तब आपके पास इतने इम्पॉर्टेंट वेपन्स की ज़रूरत नहीं है, तब आप सिर्फ कुछ वेपन्स के सहारे भी आप कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही चैरियट डेवलप हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस वॉर डेवलप हुआ, तो सिनेरियो बदला क्योंकि छोटे छोटे जो कबीले होंगे वो एक साथ संगठित भी होने लगे। और ये आपको बहुत अच्छा रिफ्लेक्शंस वैदिक टेक्स्ट में भी दिखाई देता है। 10 राग युद्ध की आप बात करें तो 10 राजाओं का युद्ध जो 10वें मंडल में है, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि उस समय तक आते आते चैरियट डेवलप हो गया, और चैरियट डेवलप हुआ तो लॉन्ग डिस्टेंस वॉर भी डेवलप हुए और नए टेरिटरी एक्युपाई करने का सिलसिला जारी हुआ। और लेटर टेक्स्ट अगर आप देखें जैसे महाभारत, तो उसमें क्लियर दिखाई देता है कि मल्टीपल टेरिटरी के लोग आकर एक जगह युद्ध कर रहे हैं।
हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो डेवलपमेंट है इंडियन सोसाइटी का और इंडियन डेवलपमेंट का, अर्बन सोसाइटी से लेके डिक्लाइन, लिटिल बिट ऑफ डिक्लाइन, और फिर से एक बार एकजुट होना, अर्बन सोसाइटी डेवलप होना, और बाद में साम्राज्य का डेवलपमेंट, ये इसका एक पूरा पैटर्न दिखाई देता है। आप महाभारत का जिक्र कर रहे हैं, पर जो इसमें भी डिवीजन आ जाता है ना, तो स्कॉलर्स जो कहते हैं कि इट इज़ अ मिथ, कोई प्रूफ नहीं है। अब आप बात करते हैं कि महाभारत में चैरियट्स थे, सो हाउ डू यू डिफाइन इट? एक तरफ साइंटिफिक थियोरीज होती हैं, एक तरफ और उस तरफ ही आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है। जो साइंटिस्ट है वो तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से जाएंगे, दूसरी तरफ कल्चर, ट्रेडिशन, स्कॉलर्स वो भी हैं, एक साइंटिफिक स्कॉलर्स हैं, एक तरफ आप पॉलिटिकल स्कॉलर्स भी आ जाते हैं, एक तरफ आप ट्रेडिशनल स्कॉलर्स भी आ जाते हैं। इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है इन ग्रुप्स में, तो आप महाभारत को कहाँ डालते हैं इस सब में? महाभारत अगर आप पूरा मिथ है, लेजेंड है, साइंटिफिक प्रूफ है, क्या है? देखिए, दो चीज़ें हैं। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है, टोटलिटी में हमें उसको देखना होगा। वो एक हिस्टोरिकल लिटरेचर नहीं है। हमको उसमें से हिस्ट्री निकालनी है, उसमें से फिलॉसफी निकालनी है, उसमें से ज्योग्राफी निकालनी है, क्योंकि वो जो इंडियन स्कॉलर्स के लिखने का जो तरीका था